बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस तरह से टीम मैदान में उतरी है पूरे हौसले के साथ, पूरे उत्तेजना के साथ, और निश्चित रूप से आज एक कड़ा संघर्ष यहाँ पर इस सेमीफाइनल के रूप में देखने को मिलेगा। गुजरात के इस अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम पर ये मुकाबले खेले जा रहे हैं और बहुत ही जुनून और हौसले से सराबोर होती हुई ये दोनों टीमें एक दूसरे का संघर्ष करने के लिए तैयार होती हुई यहाँ पर साफ नजर आ रही है। Absolutely, and the Tamil Nadu team captained by I Pavitra, D Vinodini and P Chitra will be in the corners. R Asha and R Satyapriya will be the raiders along with K Shweta, and T Mala and of course I Pavitra, the skipper, will be there in the covers, as we have the referees as well. रेफरी इसमें रामवीर सिंह है जो कि दिल्ली के हैं, अंपायर से सुमन जो कि हरियाणा की है, दामोदर वर्मा राजस्थान की, और स्कोरर जगवीर सिंह, और असिस्टेंट स्कोर आनंद तिवारी, अरुण राजपूत, और डू और डाई रेड के लिए जो ऑब्जर्वर रखे गए हैं वो अवनीश राय हैं, और 30 सेकंड टाइमर के लिए सुधीर कुमार यहाँ पर पहरेदारी करेंगे। नवीन, Yes, so as Mahesh Tiwari has got all the legal terms and conditions right, let's get underway with this first semi-finals, because more importantly what's going to happen is it's going to be that do-or-die raid where it has turned the Kabaddi into a very, very exciting sort of a game. Because earlier, say for example in 2009 to 2012, the do-or-die raid did not exist. And then when the do-or-die raid existed, that means if a team is going in the opposition's court and coming back with empty-handed 2 consecutive times, the third raid becomes an automatic do-or-die raid for the team. So the team has to score a point, either a bonus or a touch point has to be taken. नवीन, ये सारे जो बदलाव किए गए हैं ये रोचकता खेल की इसने बढ़ा दी है। जो कबड्डी एक ग्रामीण भागों में खेले जाने वाला खेल समझा जाता था, मिट्टी के मैदान पे खेला जाने वाला था, आज टेराफेक्स पे आया, उसके बाद में मैट पे आया, और ये जो रेड डू और डाई रेड आ गई, इससे बहुत बड़ा उसमें रोचकता पैदा हो गई। दोनों वहां पर कप्तान एक दूसरे के साथ हस्तांदोलन करते हुए टॉस के लिए। Absolutely, and Maharashtra will call. We'll have to see who's won the toss. Yes, Maharashtra, Snehal Shinde won the toss and she will select the court. So the first raid is going to happen from Tamil Nadu. So the importance of the toss, Mahesh, is so important that if you are asking the other team to raid first in the first half, in the second half, you can go and raid in the first raid itself in the second half. So that means even if, say, one defender is alone in the first half, last hooter, if the 20th minute is going off by keeping just one defender on court, then in the second half what happens, it doesn't become a surrender raid, it becomes a raid that you can control. You can go in, have a substitution, and then make sure that your team is not pushed into the all-out. So it's so important. Toss is so important in the Kabaddi lineup, as we were talking about the Maharashtra lineup in front of us, as we have all the playing 7. And then the first raid begins, as I said, from Tamil Nadu. The left and to the right of our screens, the right raider coming across. And this is so important that they actually go ahead and check the waters out. That is really well done. Goes back empty-handed. और यहाँ पर पहला आक्रमण करते हुए महाराष्ट्र की टीम से बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर देवासिती जो कि यहाँ पर रेड करती हुई, देखना है कि यहाँ पर अभी तक अंकों का सिलसिला जारी नहीं हुआ, लेकिन ये पहला वहाँ पर That was a fabulous block, but then look at the raid, look at the way that she recovered from that. It was a fabulous recovery, and that is Snehal Shinde, the skipper. That is a super raid that she's put in. It's a fabulous super raid for Maharashtra. तो सुपर रेड की यहाँ पर जो घोषणा की गई है, वापस वहां पर तेजी के साथ आक्रमण करती हुई, मानो पीछा करती हुई, तेजी के साथ वहां पर कदमों को बढ़ाती हुई, छलांग लगाकर नीचे से जो चॉप होता है, जिसे नीचे बैठकर एक पैर मारा जाता है, उस तरह की कोशिश करने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हुई, वापस आ गई। और अंकों का सिलसिला यहाँ पर अभी तक महाराष्ट्र के पक्ष में नजर आ रहा है। Absolutely. And then again, it's going to be that sort of a way. There, K Shweta comes across once again for a very, very important raid, because this is the time that they'll have to get some points. The bonus is available. Shweta can go ahead. Right raider comes across, attacks the right flank, and then changes her stance, attacks the left flank this time, but then does not get anything. The black line that you can probably see. And there you go, an ankle hold coming across. Fabulously done in. And once again, it is the skipper and a combination tackle by Ankita Jagpat. Number 5 jersey also has got a tackle point for themselves. So it's a super raid and a tackle. So Maharashtra
sounding a little tough on Tamil Nadu. बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही आक्रामकता के साथ शुरुआत की है। डिफेंडर बहुत ही वहां पर मजबूती के साथ पहरेदारी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ग्रिप किया था पैर बढ़ाकर, इस बार फिर रेड करती हुई तेजी के साथ दाहिनी तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ ध्यान उनका घूमता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर पैर घुमाकर स्पर्श करने की कोशिश की थी, एक अंक अर्जित किया वहां पर। एक अंक के साथ यहाँ पर तेजी के साथ अंकों का सिलसिला महाराष्ट्र के लिए इस सेमीफाइनल में बढ़ता हुआ साफ नजर आ रहा है। और महाराष्ट्र की टीम बिल्कुल वहां पर ब्लॉक करके खड़ी हुई है, किसी भी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर सकने की वहां पर गुंजाइश जो तमिलनाडु के खिलाड़ी कर रहे हैं उन्हें। और यहां पर छूने का कोशिश की थी, छूने की स्पर्श करने की कोशिश की थी राइट कॉर्नर को, जो कि वहां पर खड़ी है अंकिता जगताप, लेकिन सफल नहीं हो पाई वहां पर। और ये वापस निकलती हुई बिना किसी अंक के साथ। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि आज यहाँ पर बहुत ही आक्रामक और रोचक शुरुआत महाराष्ट्र की टीम के लिए हो चुकी है। केवल दो खिलाड़ी इस समय मैदान पे, जो कि लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर के रूप में वोलोथिनी और पवित्रा, लेकिन देखना है कि यहाँ पर क्या ये अंक यहाँ पर अर्जित कर पाएंगी। और तेजी के साथ वहाँ पर छलांग लगाकर पकड़ने की जैसे ही कोशिश की, पैरों से फिसली, मानो आज ग्रिस लगाकर वहां पर आई हैं महाराष्ट्र की लड़कियां, ग्रिप में नहीं आ रही हैं। और एक अंक के साथ और इजाफा होता हुआ स्कोर में, और निश्चित रूप से 36वें इस राष्ट्रीय खेल में इस सेमीफाइनल की जो शुरुआत हुई है, बहुत ही आक्रामक शुरुआत, जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, बहुत ही अच्छी बढ़त यहां पर उन्होंने अर्जित की है। और उसके साथ एक अंक शायद वहां पर अर्जित करते हुए लोना का इशारा, शायद एक अंक के साथ यहाँ पर खाता खुला है और निश्चित रूप से 2 अंकों का इजाफा होगा। और जिस तरह से यह मुकाबला हुआ है, यहाँ पर कहा जा रहा है 20-20 मिनट का ये खेल होता है। 12 बाई 8 मीटर का ये मैदान, जो कि पुरुषों के लिए होता है 13 मीटर बाई 10 मीटर, लेकिन महिलाओं के लिए होता है 12 मीटर बाई 8 मीटर। वहाँ पर ये सारी जद्दोजहद संघर्ष यहाँ पर चल रहा है। और निश्चित रूप से एक के बाद एक इस दूसरे दांव में यहाँ पर फिर एक अंक अर्जित करती हुई महाराष्ट्र की टीम ने वहाँ पर जिस तरह से घोषणा की थी, वहाँ पर एक अंक के साथ बढ़ोतरी हासिल होती हुई। और निश्चित रूप से यहाँ पर अब अंकों का सिलसिला महाराष्ट्र के पक्ष में बहुत कुछ जाता हुआ। दाहिने कॉर्नर में वहाँ पर जाकर छूने की कोशिश की थी, लेकिन आशा जगताप वहाँ पर आशा थी, जो कि सफल नहीं कर पाई। राइट कॉर्नर में अंकिता जगताप, और यहाँ पर ग्रिप करने की कोशिश की थी, अनमने ढंग से पकड़ने की कोशिश की, और 2 खिलाड़ियों को आउट कर इस समय देखिए किस तरह से वहाँ पर पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन बिल्कुल जो गलत डिफेंडर का जो ये था, आक्रमण था, जो पकड़ने की कोशिश की थी, वहाँ पर वो सफल नहीं हो पाई। और 2 खिलाड़ियों का 2 अंक मिलता हुआ वहाँ पर तमिलनाडु की टीम को। तो ट्रांस स्टेडियम में चलता हुआ पहला सेमीफाइनल का मुकाबला, जहाँ पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच में संघर्ष चल रहा है। और पहले ही राउंड में, पहले ही हाफ में यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम ने काफ़ी बड़ी बढ़त हासिल कर ली है और निर्विवाद रूप से उनके कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों की तादाद काफ़ी यहाँ पर नजर आ रही है इस मैदान पर, लेकिन देखना है कि इस रेड में क्या होने जा रहा है। नंबर 1 की जर्सी पहनी हुई खिलाड़ी यहाँ पर तमिलनाडु की, आशा, लेकिन बिना अंक के साथ वापस लौटती हुई। लेकिन मानना पड़ेगा जिस तरह से एक आक्रामक शुरुआत की थी यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम ने, वो अंकों का सिलसिला, वो अंक तालिका निश्चित रूप से वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे आने वाले समय के साथ साथ। यहाँ पर रेड करती हुई बिल्कुल वहाँ पर ब्लॉक करके खेलने के लिए विवश कर रहे हैं, लेकिन अंदर घुसकर हाथ बढ़ाकर स्पर्श किया, हल्का सा स्पर्श, और एक अंक काफ़ी होगा, लेकिन आखिरकार उन्हें वापस जाना पड़ा। महाराष्ट्र 12 और तमिलनाडु 3 अंकों के साथ इस मुकाबले में संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। बहुत अच्छी बढ़त यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम ने अर्जित कर ली है। केवल 9 मिनट का ये खेल हुआ है और यहाँ पर इतनी बड़ी बढ़त हासिल कर लेना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है महाराष्ट्र की टीम के लिए। और कदमों को यहाँ पर घुमाती हुई, छकाती हुई कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से स्पर्श किया जाए, अंकों को लेकर वापस लौटा जाए। और अंकों का यहाँ पर हड़ताल, जैसे मानो सूखा पड़ा हुआ है जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की टीम बहुत ही आक्रामकता के साथ और बहुत ही संघर्षपूर्ण तरीके से, बहुत ही चुस्ती फुर्ती के साथ यहाँ पर इस मुकाबले पे डटी हुई नजर आ रही। मानो संकल्प और इरादे बिल्कुल साफ जाहिर हैं, उनके बिल्कुल पक्के हैं और पूरी तरह से इस मुकाबले को अपने गिरफ्त में लेके जाना चाहती है सिंगोटे। यहाँ पर सोनाली अपनी तरफ से कोशिश करती हुई कि किसी भी तरह से अंक और अर्जित किए जाए, ये अंकों की तालिका बढ़ाया जाए। लेकिन देखा ये होती है चालाकी, ये होती है चतुराई। उन्होंने पहले लेफ्ट देखा, राइट की तरफ जा रहे हैं दिखाया और बीच में वहाँ पर पैरों से स्पर्श करके वो अंक उन्होंने अर्जित किया। और एक अंक के साथ ये स्कोर का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
गुजरात के इस अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में यहाँ पर चलता हुआ ये मुकाबला, और निश्चित रूप से यहाँ पर जो ग्रिप करने की कोशिश की थी उसमें सफल नहीं हो पाई। Ankle hold was a weak tackle there, and then you cannot be casual on the kabaddi mat. You will be a casualty. So left cover coming across, trying for the thigh hold, and then it was an advanced tackle, two very advanced outside the block line, near the midline to go for it. Once again, yeah, there we go. The ankle hold was two very advanced going in near the midline outside the block line. You just cannot go in for those weak tackles when it comes across like that. Now a right raider coming in. At this time, it's going to be that hand touch. Yes, she's got it. Running hand touch onto the right corner. And it is Pooja Yadav who's got another touch point for herself. Fabulously done. And Maharashtra is trying to put a lot of pressure on Tamil Nadu. And R. Satyapriya comes along now. Number 6 on her jersey. Tries for the bonus and then the ankle hold. What a way to go for it. Skipper does it again. Snehal Shinde. What a player she is. She goes in for the raids and then she puts out that strong ankle hold. She's got the bonus though. Tamil Nadu has got the bonus. Given the bonus. Yeah, there we go. That leading leg on the ground and the trailing foot in the air. Now with just 4 on court, I've been joined by Kulwinder Singh in the commentary box. Kulwinder, now this is not the start what Tamil Nadu wanted. बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला चलता हुआ 16-5 से महाराष्ट्र की टीम आगे, जबकि केवल 6 मिनट और 27 सेकंड का समय शेष है। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला है नवीन, और शुरुआत से ही जिस तरह से महाराष्ट्र ने बढ़त प्राप्त की है और रोड टू सेमीफाइनल जिसे कहा जाएगा, अब थोड़ा सा ब्रेक हुआ है और कोचेस समझाते हुए कि कहाँ गलती कर रही है महाराष्ट्र की टीम और कहाँ गलती कर रही है तमिलनाडु की टीम। Yeah, one timeout being allowed per half for the coach. Each coach can take the timeout. Then when one coach takes it, of course, automatically the other coach also gets it around. Now the coach of Maharashtra, Sanjay Damodar, will be just telling the girls in orange that just to keep the lead up, 17 for them and 5 for Tamil Nadu. And once again, the raider comes across. It's going to be really tough for her now as Keshweta is there, goes in, attacks the right flank and then comes back to the left. Left corner is the weak area for her, I feel, because a couple of times she's been caught there on the ankle hold. Running bonus attempted. And then right in, somehow feeling, to let it go. But then she's not got the bonus. That is what the signal from the umpire also is. She has not got that bonus across. Now, it's a situation of a super tackle. Now, Tamil Nadu can make a real good comeback if they can pin down Snehal Shinde. Can they do it? Snehal Shinde just attacking, not the chain, but the single defender onto the other side. Now she's turned around from the left and then does not get anything, goes back empty-handed. Nice that the defense also did not go ahead for any advanced tackle and then fall on Snehal because she's been really good today. Asha comes in, a lot of right raiders, and then Tamil Nadu needs to know how they can reduce men, rather than reduce the girls in orange there. आशा बिल्कुल बाएं तरफ जा चुकी थी रेड करती हुई, दाएं बाएं दोनों तरफ घूमती हुई, लेकिन महाराष्ट्र की रक्षा पंक्ति बहुत सुदृढ़ है और बिना किसी अंक के वापस लौटना पड़ा इस समय तमिलनाडु की खिलाड़ी को। और अब महाराष्ट्र की तरफ से रेड डालने के लिए जा रही है सोनाली शिंगटे, जबकि सामने केवल और 3 खिलाड़ी हैं और डबल डिफेंस और एक सिंगल बॉक लाइन को क्या पार किया, उसके बाद बोनस अंक हासिल करना चाह रही हैं, बोनस अंक से रोकना चाहेंगे, लेकिन बाएं दाएं दोनों तरफ। Yeah, absolutely. The bonus is being given only when there are 5 or more than 5 defenders. That was a super tackle situation there. And then it's nice to see 2 empty raids by Maharashtra has already come in. Now this is a do-or-die raid by Tamil Nadu, and Keshweta has to understand that she has to get a bonus point at least, if not a touch point. She has to go in deep because this defense is really good. Hasn't been allowing the bonus as well, but then even to get the bonus, she has to understand that the back hold will come in very strongly. That's a proper back hold being put in from the left corner, and that is Rekha Sawant. Generally the left corner defender comes across for a back hold. 18-5 से आगे चलती हुई, और इस समय ये देखिए किस तरह से गई थी, जिनको होल्ड किया था, बैक होल्ड किया था और इसके अलावा अंक हासिल किया, और एक बार फिर से टाइम आउट और अंक अपनी टीम को दिशा निर्देश देते हुए कोच और बीच में रेफरी ने भी आपस में बातचीत कर रहे हैं. Also Kulwinder, one more important point here wherein Tamil Nadu now have a very good chance because it is going to be a do-or-die raid for Maharashtra and it is a super tackle, but only 2 defenders. That is what coach has been telling them, Nithya.
Nadia, correction there, the coach of Tamil Nadu, Nadia. So she will be telling them it's going to be Sonali who will be coming in. Number 2, who's put in very, very good rates. This is going to be a do-or-die raid. As I mentioned, it's going to be a super tackle. Now it is going to be that wherein both the defenders are single-handedly, they'll have to probably make out who is going to go for that first tackle. Now that's a weak tackle. That's an advanced weak tackle that has been coming in. That's a correction that I, Pavitra, had to make. The skipper committing the error, and Sonali is very good for all this. और इस तरह से ये देखिए जिस तरह से एंकल होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन कमजोर एंकल होल्ड था और एकदम उन्होंने अंक हासिल किया। अब अकेले खिलाड़ी और अब गए हैं रेड करने के लिए। इस समय तमिलनाडु की तरफ से आशा, और आशा बहुत कम है उनको कि वो अंक हासिल कर पाएंगे। होल्ड कर लिया गया, शानदार एंकल होल्ड किया गया, अंक हासिल कर लिया गया। It's an all out that was Maharashtra was waiting for a long time. That is a big lead what Maharashtra's got. Look at that, comes in, goes for the bonus, and then strong ankle load attempted from left in position. And today is somewhere is Snehal Shinde's day. Number 1 on her jersey. Maharashtra, she's been doing really well, and that is what Sanjay Damodar, the coach of Maharashtra, will be really happy for. They need raid points. Somehow they have to make sure the raids come in. I think K. Deepa is ready on the substitution lines. She will be coming back as a raider. K. Deepa will come in, but who's going to go out? That's a big question. Yeah, it is B. Chitra, I guess, will be going out. The right corner will be going out. B. Chitra on the substitution lines, and K. Deepa will be coming in. They're strengthening the defense though, but not a problem. They're strengthening the defense, and also she comes in to the left cover position there, K. Deepa. So I understand why, because it is Sonali and Snehal who are the 2 strong raiders of Maharashtra. They want to nab them down somehow, as I, Pavitra, is there in the right corner position. There we go, running and touch, she's got it. Right corner, playing a high line defense. Teamala should have backtracked well, does not get it, and what a brilliant raid once again by Snehal Shinde. She does it so easily that even the right cover did not have any time to go back in time. 23 now for Maharashtra. 2 मिनट 40 सेकंड का समय शेष, और यहाँ पर 1 अंक हासिल किया है इस समय तमिलनाडु की टीम ने। और अब महाराष्ट्र की तरफ से रेड करने के लिए पहुंची हैं, और सभी खिलाड़ी रक्षा पंक्ति में बाएं और दाएं। अभी दाएं फ्लैंक से अटैक करने की कोशिश, अंक हासिल करने की कोशिश, बॉक लाइन को पार किया। क्या बोनस अंक हासिल कर पाएंगे या नहीं, देखने वाली बात है। लेकिन ज़्यादा मजबूत डिफेंस है नहीं तमिलनाडु का, और इस वजह से हालांकि अभी तक कोई अंक हासिल नहीं किया है, और केवल अभी 6 के मुकाबले 23 अंकों से आगे। अब इस समय रेड करने के लिए गई हैं तमिलनाडु की तरफ से सत्यप्रिया ने टच किया। क्या यहाँ पर अंपायर का इशारा, 1 अंक हासिल किया। Beautiful running hand touch by Satyapriya. Went in and attacked the right flank, who was just trying to play a high line defense there, and much needed. Yeah, just there we go. Attacked in surprise, and taking out the right in is not a very easy task. Satyapriya needs to do such raids even better for Tamil Nadu to come near 23 somehow, because it's just under 1.5 minutes now left in the first half. It's going to be really important. Bonus being attempted once again by Snehal Shinde. Also, Kulvinder, in the strategy form, what I will want to really tell is, now for Tamil Nadu, if they want to make a comeback, what they'll have to do is, they'll have to get more raid points, and then in the defense, they should not target Sonal. They should not target Sonali, or they should not target Snehal. They should not probably doing this, but you cannot have a back emptied in so much. You cannot be blinded, and what a running back hold that was. Once again from Rekha Sawant. How many times have we seen this? Look at that. Left corner, lets the chain loose, goes across, and very easily covers the angle out, and also the dangling leg being taken care of. That's a very good team effort and a combination tackle by Ankita Jakpat and Rekha Sawant. फर्स्ट हाफ में केवल 44 सेकंड का समय शेष। अटैक करने के लिए महाराष्ट्र के रेडर हैं इस समय, और यहाँ पर निकलना चाह रहे थे, क्या निकल पाएंगे, और शानदार तरीके से कम हम रेफरी का इशारा। I'm feeling it's 2 more points for sure. Oh, it's a super raid. There you go. Another 3 points. Multiple point raid. This is what Tamil Nadu will be seeing as a big dent in their confidence, and also the number of girls on court. They have been reduced once again only to 3 girls on court. First time I'm seeing a left raider in a Tamil Nadu lineup. Yeah, this is a very good change. The Vinodini comes and steals the bonus away under the nose of right corner. Now a super tackle situation, Kulwinder. और अब केवल 7 के मुकाबले
27 अंकों से इस समय आगे। महाराष्ट्र और तमिलनाडु का ये मुकाबला, और इस समय नंबर 3 पूजा यादव गई है रेड करने के लिए महाराष्ट्र की तरफ से। This is going to be the last raid of the first half, and if Tamil Nadu can pin her down, they'll get 2 points. 3 or less than 3 defenders on a successful tackle will be getting 2 points. But that's the half. 15-minute per half on the women's edition in the semi-final number 1. 27 to Maharashtra, 7 to Tamil Nadu. और जब एंटर हुई थी रेड करने के लिए, कुछ सेकंड का समय बाकी था, तब रेड पूरी की जाती है और उसके बाद अब ये 15 मिनट का ब्रेक है। और अब फर्स्ट हाफ में 8 के मुकाबले 27 अंकों से महाराष्ट्र की टीम आगे चलती हुई तमिलनाडु के मुकाबले में। Yeah, in the first half, what actually we saw is a lot of advanced tackle and defensive errors by Tamil Nadu, because you were going into attack. Snehal Shinde and of course Sonali Shingate was probably trying to have a lot of touch points, especially attacking the right corner and right cover of Tamil Nadu. There's no issues on the left corner, but because there are all right raiders, they're going in and attacking the right flank. और नवीन, एक बात यहाँ पर यह भी कहना चाहेंगे कि सेमीफाइनल की दौड़ तक जब पहुंचे हैं तो महाराष्ट्र की टीम ने शुरुआत से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि पहले मुकाबले में बड़ा कठिन मुकाबला था। हिमाचल प्रदेश से 31 के मुकाबले 32 अंकों से महाराष्ट्र ने जीत हासिल की। उसके बाद महाराष्ट्र ने बहुत बड़े अंतर से गुजरात को 22 के मुकाबले 40 अंकों से पराजित किया, और तीसरे मुकाबले में महाराष्ट्र ने बिहार को 20 के मुकाबले 36 अंकों से पराजित किया। तो बहुत फेवरेट है। ये देखिए, रिप्ले में देखिए किस तरीके से यहाँ पर कम से कम 3 खिलाड़ियों को टच करके वो हाफ लाइन तक पहुंचे हैं। It's an anti-block that we call. You know, the block came in and then she was very strong, as I said. Snehal today, the skipper of Maharashtra, and also she's been very well supported by Pooja Yadav. And also the Raiders have struggled. The Tamil Nadu Raiders have really struggled, especially in that left corner and left in position. The back holds, that has been fabulously put in. Rekha Sawant, give it up for her. The strong left corner, couple of strong back holds. Very strong Raiders coming across. It's not easy for a very light-footed Rekha Sawant to go for those backwards. And look at this. This is the raid of the game. And once again, that came in very strongly from the skipper Snehal Shinde and also Sayali Kripale. She also puts in occasional raids. And that was a proper anti-block sort of a technique that has been utilized by all the modern Raiders now on the Kabaddi court. But the second half will be very interesting. And Tamil Nadu will really want to make a big comeback and then make sure that somehow Maharashtra has been pushed to some sort of a pressure. Because for the girls in blue, they'll have to understand that it's all for the raid points that is so important. The defense, of course, is having a lot of trouble. But even then, if the defense cannot just go attack the Raiders, that itself is more than enough. But if they can preserve those points, it's going to be really good day for Tamil Nadu. And imagine, the winner will go through to play the finals tomorrow. और सबसे बड़ी बात यह है कि नवीन, ये जो परंपरागत खेल है, इंडिजियस गेम है कबड्डी, भारत से ही ये पनपा है। और एशिया में भारतीय चाहे पुरुष टीम हो चाहे महिला टीम हो, उनका दबदबा बहुत वर्षों से कायम है। तो मैं समझता हूं कि महिलाएं में बहुत अच्छे तरीके से आज यहां पर कई खिलाड़ी उभर कर आएंगे। लॉन्चिंग पैड कहा जाएगा 36वें राष्ट्रीय खेलों को, जहां से खिलाड़ी उभर कर जाते हैं और देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। They have to take a lot of inspiration from the greats like Arjuna Awadi, Mamta Pujari, Tejaswini Bai, and so many other players. Usha from Karnataka, she was captaining Karnataka for a very, very long time. A lot of inspiration that has to be provided by them to these girls. और पद्मश्री डॉक्टर सुनील डबास वो भी यहाँ पर हैं और उन्होंने बहुत सालों तक भारत का प्रतिनिधित्व किया है। In the men's, you mean? Yeah. Yeah, correction there as well. The beginning of the second half, and we have a super tackle now. Now Tamil Nadu should understand that this is a very big opportunity somewhere to pin down Pooja Yadav. Pooja Yadav has only been that little, I would not say a weaker raider, but comparatively for Snehal Shinde, she's not got too many raid points. So she might be low in confidence, and that's a proper double ankle hold. That is what you want, and the cover comes in at the right time, and that is where you pin down 2 points. Really well done. Ankle hold attempted, and then Asha came in for the support
and 2 points for Tamil Nadu. What a good beginning. This is what you want to see. Diving ankle hold comes in from that right corner. Yeah, there we go. Proper diving ankle hold, but then the support is so important from Team Ala and Arasha. Everybody getting along with B Chitra as well for the super tackle to be successful. और दूसरे आपका ये पहला अंक जो हासिल किया था उसके साथ ही एक बार फिर से Yeah, bonus +3, bonus +2, then that's a super raid once again. Tamil Nadu again striking back in the raiding department as well, Kulwinder. This is what they will be discussed on in that first half's break. Goes in, attacks that left flank because left corner has been very good for Maharashtra in the first half, especially the back holes of Sonali Shingate. And now this raid from Sonali Shingate comes in as a very, very big boon for Maharashtra if she can get a touch point from somewhere. But they don't want to do it. They have a big lead. They can just play on the time and try and pull this to the last 30th minute of the game. और बास्केटबॉल में, कबड्डी में ये जो लीड होती है कभी भी कम हो जाती है, इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और अब तमिलनाडु की तरफ से रेड करने के लिए पहुंची हैं और देखना है कि क्या ये अंक हासिल करेंगे। लंबे कद के खिलाड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर आशा के लिए ज़्यादा आशाएं नहीं बनती है और अंक ज़रूर हासिल किए। दूसरे हाफ की शुरुआत में अंक हासिल किए थे तमिलनाडु की तरफ से, लेकिन यहाँ अंक मिलना चाहिए, लेकिन बाएं और दाएं में यानी कि लेफ्ट और राइट कॉर्नर पे लेकर जरूर गई, लेकिन कोई अंक हासिल नहीं किया। Yeah, there's a green card coming as a warning. Yeah, during the raid, no coaching. That is what the referee says. Very, very important. You cannot coach your player while she is there on the opposition court and raiding. So you'll have to keep quiet. All these girls, I understand they are very young. They are trying to make it for the Indian team, playing the national game here. And then a running hand touch. Really well done. What a way she immediately changed gears there. And this is what you want to see for Sonali Helavi. She comes in as a substitute and then goes and attacks the right corner very easily. Another point for Maharashtra. और निकिता अब गई है रेड करने के लिए दाएं कॉर्नर से, और क्या यहाँ पर वो अंक हासिल कर पाएंगी देखना ये है। अभी तक वो केवल डिफेंस को देख रही हैं अपने दाएं कॉर्नर से, दाएं तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन डबल डिफेंस जो है बहुत जबरदस्त तरीके से आगे पीछे निगाहें रखनी होगी। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और अभी उन्होंने बॉक्स लाइन को पार किया। क्या बोनस अंक हासिल कर पाएंगे? Yeah, as there are just 5 defenders on court, the bonus will not be available, so the raider has to go inside deep. The bonus is available only with 6 or 7 defenders on court. Even if there are 5 defenders, the bonus line will be deactivated, it will be inactive. So that is where the raiders need to understand that they'll have to go inside deep. And now, even now here for Sonali, that's the reason, see, the defense line is playing so at the end of the end line. And they leave that bonus line because it's not active. As Sonali, very, very good thinker of the Kabaddi game, goes back empty-handed, knows that this is going to be a do-or-die raid now for Tamil Nadu. Very, very important raid, and our Asha should understand that there is no bonus and she has to get inside deep. And a diving ankle hold by Sonali. Has she crossed the midline? Yes, she has. What a raid this is. How many girls? Now they are counting. This is a raid of the game that's going to turn around that towards Tamil Nadu. 2 important points, and that is Sonali, who was raiding very, very well. Attempted a weak ankle hold and then she has to go back. Why do you have to do that when you can raid so very well? That's a big question that's coming across. And also, along with her, it's going to be Raksha Narkar who has to go outside. और अब पूजा यादव गई है रेड करने के लिए, और पूरा डिफेंस है इस समय तमिलनाडु का, और अंक लगातार प्राप्त किए हैं। हाफ टाइम तक 27 अंक थे महाराष्ट्र के, अब केवल 28 हैं और 15 पर पहुंच चुके हैं तमिलनाडु, काफी कुछ वापसी करते हुए। और अब यहां पर गई हैं आशा रेडर के तौर पे दाईं तरफ, उन्होंने दाएं बाएं दोनों तरफ से कोशिश करते हुए। डिफेंडर बहुत कम, डिफेंस में बहुत कम 3 खिलाड़ी हैं। क्या यहाँ पर वो अंक हासिल कर पाएंगे? टच किया क्या यहाँ पर, और उसके साथ ही ये सुपर टैकल जी, and coming across, not getting the angle right, and then the backtracking skills by Arasha not right, just blinding yourself. Look at that, she just blinded herself, and then the dash came across so strong from Pooja Yadav. Had to get that 2-pointer. Then the bonus attempted a weak ankle hold. Once again, not a right way to do that. D. Vinodini from left corner. When do you have to go for the ankle hold is so important, that when the raider is not aware of that bonus line. And there, kick comes in, nullified with the right corner, and then the right cover. Wonderful dash by Ankita Jagpat. Goes in for the kick on the left corner. The left corner just completely
flat, floored on the ground. Kulwinder, look at that. That's a skill that a left corner defender should have. And look at that dash that came across so strongly from the right cover. And Ankita Jakpat will be really happy with that decision, because now Maharashtra can dictate the terms. पूजा यादव इस समय रेड करने के लिए गई हैं, अंक हासिल कर सकते हैं केवल 4 रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी। दाएं बाएं कोशिश करते हुए, डिफेंस काफी उनका मजबूत है 2-2 खिलाड़ियों के तौर पर, लेकिन अंक हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक और रणनीति रहती है कि अगर आप आगे चल रहे हैं तो आप पूरा समय लें ताकि समय को आप ज्यादा से ज्यादा किल कर सकें। अब इस समय तमिलनाडु की तरफ से रेड होती हुई, तमिलनाडु की तरफ से क्या अंक हासिल कर पाएंगी तमिलनाडु की श्वेता? Bonus is on for her this time. She goes for it. Can she from that class? No. Just cannot be freed from that strong ankle hold coming across. So that is not what you really want to see. And that's a strong ankle hold. Once again, look at that left corner. Yeah, puts it across. And today, Rekha Sawant for sure has got her high five, no doubt, in the defense. And now a super tackle situation for Tamil Nadu. They've got one super tackle in the beginning of the second half. They go for it. Double thigh hold. Another super tackle. Successful one. Twice in the succession here on the second half. You've got it very right. What a way to execute those double thigh holds. Look at that. And also, she did not require any support also coming across. K. Kavya, she is the substitute who did not start in the starting 7 and then making her presence felt in the super tackle situation. Couple of occasions. That was really well done. Once again, raid going in. There we go, another touch point. जर तुमच्या UPI ॲप मध्ये काही अडचण आली तर आपल्या UPI ॲप मध्येच कंप्लेंट नोंदवा आणि आपल्या अडचणीचं समाधान मिळवा। इकडे तिकडे इंटरनेट किंवा कोणाकडून तपासून पाहू नका। सुरक्षित राहा, UPI करा। Issued in public interest by National Payments Corporation of India. So pressure is still on, under 8 minutes of game, but 33 looks a far away target. But Ankita Jakpat on that right cover, playing a high line defense, couldn't go back in time, as now there is an option for Sayali to raid. Probably a formal raid, Kulwinder, because she's a defender. She will not go in too much. She'll not disturb the defense because she knows that she has to just cut the time out. और बिल्कुल टाइम को कट करने की कोशिश पूरे समय को, और ज्यादा आगे तक अंदर तक वो नहीं गई। और अब रेड करने के लिए इस समय आशा गई है, रेडर जो कि जानी पहचानी रेडर है तमिलनाडु की। और यहाँ पर क्योंकि अंदर तक जा सकती हैं, क्योंकि बोनस ऑन नहीं है, इसमें बाएं और दाएं तरफ दोनों तरफ बड़े चौकन्ने होकर कोशिश करती हुई, लेकिन अभी तक उनको सफलता नहीं मिली है अंक हासिल करने की, टच करने की। लेकिन क्या यहाँ पर उनका इशारा है, और उसके साथ ये एक अंक हासिल किया इस समय तमिलनाडु की आशा ने। टच किया था, और जिस तरीके से टच किया अंपायर की नजरों से बच नहीं सकता। एक अंक और 19-33। Proper running hand touch that we call in the options. That has to go ahead and make sure. Now the toe touch. Kick comes in, very strong. Sonali gets her. Target very nicely. Left corner has to go back now. Much needed. And because our Asha was a very good raider, she targeted herself. Look at that. And what was our Asha doing there in the left corner? Being a top raider for your team, why do you have to man such a big, important defensive position? This is going to be really tight now. A back hold, running back hold comes in. Strongly done. What is the error from all the raiders of Tamil Nadu are? They are blinding themselves up. And K. Deepa was no new for this technology. Look at this. She goes in blinded. She does not understand from that left corner. Defense is coming across to her as Kulwinder has taken a break and have been joined by Mahesh Tiwari. बिल्कुल बिल्कुल, और इस तरह से ब्लाइंड कर देना, पूरी तरह से अदृश्य अपने आप को रखना और उसके बाद में ग्रीप करना, मैं समझता हूँ खिलाड़ियों को बिल्कुल ये सभी चालाकी होती है, चतुराई होती है जो कबड्डी के खेल में अपनाने जो होती है। और जब बोलते हैं ना, आपकी कोई चीज़ सही हो रही है तो हर चीज़ सही हो जाती है, जब गलत होती है तो हर चीज़ गलत हो रही है। तमिलनाडु की तरफ से कुछ चीज़ें गलत हो रही है तो हो रही है आज, लेकिन दूसरी तरफ से महाराष्ट्र की टीम ने अपना प्रबल, अपना दावेदारी, अपनी दृढ़ता यहाँ पर साफ जाहिर की है। 35 के मुकाबले 19 अंक, यानी लगभग यहाँ पर बहुत बड़ी बढ़त, 16 अंकों की बढ़त हासिल है यहाँ पर। Absolutely. Just 4 defenders on court. Will not be trying too hard there. Yeah, as expected, she'll go back empty-handed because she knows that they've got a big lead. That's also a time-killing strategy. But now Tamil Nadu has to put in big raids, quick raids, more importantly, as Sonali went back for empty raid. And what a thigh hold. Strong thigh hold from right cover. And Ankita Jakpat once again
Make sure the raider is not even moving in her stance. Look at that. Goes in strong, covers the angle up, and then double thigh hold. Ankita Jakpat and also, let me tell you, Rekha Sawant. Both are strong defenders. Another super tackle situation here coming across. Can they get it? Twice they've got it, Tamil Nadu. Can this be a third time in a row? But can they do that? All the super tackles been successful here in the second half, but no. Intelligent bit of a raiding. Does not go in deep and goes back empty-handed, Sonali. So 2 empty raids for Maharashtra now, and the next raid for Maharashtra is going to be a do-or-die raid, and if possibly they can come back in this raid with a point, Tamil Nadu, it'll be really interesting to see how a super tackle and a do-or-die raid situation will pan out. That is what is so important to watch. She can just come back, try her best, attacks the left flank, does not get anything, go back. Now that is a very, very important raid, as Sonali whispers a lot of things in her ears. Pooja Yadav, pressure raid, Mahesh, super tackle and a do-or-die raid. बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर अपनी टीम के लिए, और यहाँ पर वो सफल होती हुई वहाँ सब सीधे छलांग लगाकर जैसे ही एंकल ग्रिप करने की कोशिश की थी सोनाली, वहाँ से फिसलती हुई निकलती हुई वहाँ पर जा रही हैं, और जो सुपर टैकल का जो बात की था आपने वहाँ पर नवीन, वो वहाँ पर सफल नहीं हो पाया जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है। और 3 नंबर की जर्सी पहनी हुई पूजा यादव वापस लौटती हुई 4 very good backtracking skills, I'll say, by Pooja Yadav. The way she jumped out of the grasp of the left corner defender D Vinodini, she should have understood, Vinodini, that it was not a very, very strong tackle when you're attacking a raider from so far. And now much needed break for Sonali Shingate. She gets a break and she goes back and brings in Megha. And nice to see Sanjay Damodar from Maharashtra shuffling his players across and making sure everybody gets that mat practice. Mat practice is very, very important, because tomorrow the finals, and it looks like under 5 minutes, looks like Maharashtra already have stepped in one leg in the finals. बिल्कुल बिल्कुल 18 अंकों की बढ़त अपने आप में एक बहुत बड़ी बढ़त कही जा सकती है यहाँ पर नवीन, क्योंकि ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। तमिलनाडु जैसी मजबूत टीम को आज पूरी तरह से चारों खाने चित जिसे कहते हैं कबड्डी में, उस तरह से करती हुई महाराष्ट्र की टीम ने, और जो गलती यहाँ पर तमिलनाडु के जो रेडर कर रहे हैं उनका ध्यान हट रहा है, उनकी जो बैक दे रहे हैं, पीठ दे रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। जो आए और ले का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो साफ नजर नहीं आया। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की टीम के जो खिलाड़ी हैं, जैसे अभी इस समय पूजा यादव यहाँ पर सर्व कर रही हैं, रेड कर रही हैं, लेकिन पूरी तरह से another super tackle opportunity gone by, and it is going down the drain. That is not what a super tackle should be attempted as. She got the angle, then when another step has been stepped back, the angle has been going across to Pooja Yadav. And now last girl standing, do-or-die raid, and also raider has been pushed out. Tamil Nadu, another all out. Once again a fabulous dash by Ankita Jakpat. Look at that for a dash. It's an all out, a second one for Tamil Nadu, and not a right time to come in the second half, and this is going to be a big mountain to climb. Look at that right cover, no problem, solo tackle, solo dash, and she's got it. I think 2 defenders have got high-five already. It's Ankita Jakpat and also somewhere Rekha Sawant. You know, what is a high-five? When a defender scores 5 points in a match, that's called a high-five. So I guess both the defenders getting a high-five. That's why Tamil Nadu is struggling. बिल्कुल पूरी तरह से संघर्ष नजर आ रही है। आज जो डिफेंडर्स हैं वो पूरी तरह से अपने फॉर्म में नजर नहीं आए, पूरी तरह से गलतियां उनकी हुई, आक्रामकता में तो कमी नजर आई ही, और जो आए और ले कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो नजर नहीं आया, और उसके वजह से यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर 1 अंक के साथ वापस लौटती हुई 1 अंक का इजाफा जरूर हुआ है। 21 अंकों की बढ़त महाराष्ट्र की टीम के पास, 41 के मुकाबले 20, बहुत बड़ी बढ़त यहाँ पर नवीन। 2 points there we go. Both the covers, I guess, coming across, and also the left corner. Jersey pulling not allowed, and another point being given away. Another 2 points for Maharashtra as we step into that last 2 minutes. And this is going to be really interesting of how will Maharashtra look at this game and build up a lot of confidence. Yeah, that is why you've been given a green card. There we go. No jersey pulling. That is what will be the indication from the referees. You cannot tackle a raider by pulling the jersey. You cannot tackle a raider by putting your arms around the neck. It's all a no-no. Running hand touch being attempted. Once again, not getting it right though, Tamil Nadu, but still, Mahesh, I really want to look at Tamil Nadu's efforts here.
and of course they've done a lot good work in the league stages, and that's why they are in the semi-finals. They have to look at this match as a big learning. बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि राइट कॉर्नर जो अंकिता जाधव और मेघा कदम का था वहाँ पर जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, जो ग्रिप की बहुत मजबूती के साथ एंकल ग्रिप की उन्होंने। लेकिन यहाँ पर जो तमिलनाडु का आपने जिक्र किया कि भले लीग में उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला हो, लेकिन आज यहाँ पर जब एक अच्छे खेल की जरूरत थी वहाँ पर आपकी टीम अगर 20 अंकों से पिछड़ जाती है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी नाराजगी होती है। और यहाँ से उभर पाना, अब 1.43 सेकंड का खेल बाकी है नवीन, अब यहाँ से वापसी करना असंभव नजर आ रहा है। Also, there is another point that the losing team of this semi-final should understand is there is no match for the third and the fourth place. So you will not know probably who's there getting that bronze also. So it's always another important issue these teams who are losing in the semi-final should understand. Even the next semi-finals will be coming up in a short while after this game. So you will have to make sure that you win the semi-finals. And then once again blinding today by both the teams is on the cards. A very, very good block and a dash coming across from the right corner. That's a first proper tackle from Tamil Nadu, putting across because the raider was blinded. Once again, it was Megha Kadam who was there in the raid for Maharashtra, and the right corner doing well. B. Chitra on that final occasion. Under a minute, we will have to look at this. Look at that. Diving back hold. Ankita Jakpat is a name to remember for. And I'll not be surprised if she will play the Indian team very, very soon. What a strong defender. Rekha Sawant, Ankita Jakpat, and of course the skipper Snehal Shinde. And do not forget Sonali Shingate. I saw her even in the Khelo India University Games, which was very live and exclusive on our channel. And once again, just a formal and solitary raid. Sonali was a very, very good prodigy, and that is where she's found her name in the 36th national game as well. बिल्कुल पूरी तरह से वो हावी होकर यहाँ पर खेलती हुई नजर आई हैं, और इसी की वजह से आज ऐसा रहा है कि महाराष्ट्र की टीम ने इतनी बड़ी अंकों की तालिका यहाँ पर अर्जित कर ली है। सोनाली हो, चाहे पूजा यादव हो, स्नेहल हो, सोनाली शिंदे हो, उन्होंने सारों ने मिलकर और यहाँ पर टच एंड गो का यहाँ पर जिक्र हुआ है। वहाँ पर सुनील in Kabaddi, Mahesh, there is no touch. You'll have to make sure the crossing of the midline has to be done. She touched it. Oh, there we go, right there on the index finger and the middle finger, just touching the midline, but she had to cross it. If she had done, entire Maharashtra team would have been sent out of the court. It would have been a big all-out. But Arasha did her best, but just in patches. Once again, I think that is what the time is. 30 seconds on this match gone down. I think this will be the sole solitary last raid for Maharashtra. 45 to Maharashtra. They are our first finalist in the 36th national games here happening in Gujarat in Trans Stadia 2022. Maharashtra dominant performance and making sure Tamil Nadu did not even put up a competition in front of a very strong raiding and defensive skills. A 20-point victory means Maharashtra has come down as a thumping victorious team on Tamil Nadu, and made sure they also damage a lot of confidence of the Tamil Nadu girls. But I will again say Tamil Nadu girls will have to look at this in a very, very good sporting spirit and take this game out as a big learning, because their raiding suffered, because the raiders were again blinded. Defense was fabulously good for Maharashtra, especially, as I said, Sonali Shingate and Snehal Shinde. So you cannot do much in front of such strong right covers and left corner. Then what you'll have to do is you go back and try and see your footages, try and learn from that. This is what I was trying to tell you. Look at that. The defense of Tamil Nadu has totally faltered. They haven't put out a proper chain tackle. They haven't had a strong ankle hold. But Sonali, when she was there raiding, goes in also for the tackle just for getting some practice even in the defense, because they are the first finalists coming across. But look at this. This is what I was telling you, Mahesh, where they are completely blinded in raiding. So they should not be blinded as we have our first finalist, Maharashtra. बिल्कुल बहुत बड़ी जीत यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम ने अर्जित कर ली है। 45 के मुकाबले 25 अंक वहाँ पर अर्जित किए थे। तमिलनाडु की टीम ने 20 अंकों के साथ इस सेमीफाइनल को जीत कर फाइनल में अपनी जगह बना ली है महाराष्ट्र की टीम ने। और नवीन, आज चाहे डिफेंस हो चाहे अटैक हो, दोनों ही डिपार्टमेंट में यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम बहुत मजबूती के साथ खेलती नजर आई। मानो जैसे ही वो मैदान में उतरी, जीत के जौहर उनके साफ नजर आ रहे थे। तो ये बताते हुए कि ये मुकाबला सेमीफाइनल का जो खेला गया यहाँ पर ट्रांस स्टेडियम में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच में, यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम ने पहले सेमीफाइनल
जीत कर फाइनल में जगह बना ली है और कुल मिलाकर 45 के मुकाबले 25 अंकों से जीत कर 25 अंकों की 20 अंकों की बढ़त के साथ वो फाइनल में पहुंच चुकी है। Yes, absolutely. And who will be the second finalist is a big question. As we have Haryana coming out. This is the second semi-finals. Haryana. We have to talk. We have to talk. The terminologies are very wrong by you both. We will talk and see. एक जुड़ होके I will talk on the terminologies. You guys go on the grip नहीं बोलते. It's always hold. It's always tackle. Don't say grip. So बहुत सारा confusion है. We'll see what can be done. After this match we will talk. For the men's match ना, we have to have that conversation. एक छोटा सा conversation करेंगे. कौन कैसे कैसे बात करेंगे करके. We should not be saying wrong terms. क्योंकि कबड्डी is next to cricket now. We should not say wrong terms on air. नहीं हिंदी में नहीं होता. No ball is no ball ना in Hindi. Thank you. Himachal Pradesh in white and black, and then Haryana in that light green jersey, much needed. This is the Haryana team in front of us, all set to play the second semi-finals. Much needed. Because already, if Maharashtra has made their cut, Himachal Pradesh will be also real important contenders for their black and white. The Himachal Pradesh and Maharashtrian girls, much needed match on the second semi-finals. Really going across and trying to get started with this second semi-finals. हेलो 1 2
check. Right, we are all set for the second semi-finals. I am Navin Shourie. I've been joined by Kulwinder Singh Mann for the second semi-finals, please. Kulwinder Singh Mann. Kulwinder Singh Kang there. Correction, sorry, because there's so much happening there and everything is getting underway for the second semi-finals. Yes, Kulwinder. स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस कवरेज में। और दूसरा ये सेमीफाइनल मुकाबला हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में, और सफ़ेद ड्रेस में हरियाणा और ब्लैक रेड में है हिमाचल। हिमाचल रेड करने के लिए शुरुआत करते हुए हिमाचल की तरफ से इस समय गई है ज्योति रेड करने के लिए। काफ़ी सुदृढ़, काफ़ी मजबूत खिलाड़ी लेफ्ट कॉर्नर में गई हैं उन्होंने। Attacking the right corner, now goes across, gets a running hand touch on the left corner as well. But then somewhere, Haryana swearing on the mat and saying, no, they haven't got it. Referee will agree with the Himachal Pradesh's team. Once again, a right raider comes in, looks very strong there from Himachal Pradesh. Also trying to attack that left corner, because already it's that 1 point that's been coming in. Ankle hold, once again a weak tackle from left corner. Has to go back now. This is not a proper way of what the Haryana will want at the start to be happening. Himachal Pradesh already going away with 2 touch points, a weak ankle hold. Once again coming in from Ekta. That is how the team has been panned out. Left raider, right! That's the proper double thigh hold. Bonus being given away, but not a problem. The left corner of Himachal Pradesh is active now. और जिस तरीके से यहाँ पर होल्ड किया, पकड़ा, बिल्कुल टच लाइन के करीब पहुंच गए थे मध्य रेखा तक, लेकिन उसके सामने से उसको हैंडल कर लिया गया। और अब ज्योति गई हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ से रेड करने के लिए। निधि शर्मा रेड करते हुए बाएं कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में, और टच करने की कोशिश और उसके साथ टच करने में सफलता, 1 अंक हासिल किया। और यहां पर 2 नंबर की जर्सी में हरियाणा की खिलाड़ी मंजू को उन्होंने टच किया और अंक हासिल किया। 1 अंक हासिल किया इस समय हिमाचल है। हिमाचल 4, हरियाणा 1। Left raider once again trying to go for the toe touch on that left cover, does not get it right, but a very strong left corner has to be wary of her. Then also the right corner coming and scaring away. Empty raid, has to go back empty-handed, not as what has been thought of by Sonia. But somewhere there has to be said, Pushpa is a very strong raider. Comes along the jersey number 3 there for Himachal Pradesh. Now also a super tackle situation, very important if she can be away from the defenders. Yes, well done. Goes back empty-handed. और इस समय हरियाणा की तरफ से लेफ्ट कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में अटैक, और डिफेंस ने बिल्कुल पूरी तरह से उनको बिल्कुल रोक रखा है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। उसके साथ ये सामने से टैकल किया और अंक हासिल किया। इस समय हिमाचल प्रदेश की टीम ने 1 अंक हासिल किया। So the dash comes across very strongly from the left cover. Look at that. High line defense, left cover goes across, and then made sure the dash also is being supported by the left corner. Very nicely done. Good orchestration of how the defense and the dash has to happen. A super tackle situation. And suddenly Haryana, just 2 girls on court. Another weak ankle hold attempted. Do you know how Netflix recommends you the right content? Or how Ask TELUS chatbot gives the right answers to all your queries? Well, they use machine learning. Machine learning is transforming all technologies, and you too can be at the forefront of this amazing technology. Join this free expert session on machine learning by Inside AIML. We have trained more than 10,000 minds and have uplifted many more careers. So don't wait. Click on the link below to register.
EIML मतलब Inside EIML. And that is how it's been reduced just to one man on court. It's very far from the back line. Look at that. You just had to put 2 more steps towards the Raider, and then you will have to go for that ankle hold very strongly. Does not get it. Last girl now, last player for Haryana, and this will be a pressure situation for her, because she has to understand, Sonia, that if she's getting tackled without a bonus, it's going to be an all-out. And the defense is playing really well, the waiting game. Last 10 seconds, and she's been pushed out. Right, it's a bonus +1, and also another defender going outside the court. We'll have to see what happened there, because bonus +1, and if Sonia would step into the lobby without a connection, yeah, there we go. She was stepping into the lobby without a connection of the defenders, and then the defender also had to come back, stepping into the lobby. Surrender rate, all out, and Himachal Pradesh are leading this very easily. 10 now for them on the board, and Haryana have been succumbed to the all-out in the first 10 minutes of the match. शुरुआत के समय में एक बार ये देखिए कि इस तरीके से अकेले ही डिफेंडर थी, पकड़ने की कोशिश, लेकिन सफलता नहीं मिली और अंक हासिल किया हिमाचल प्रदेश ने। तो पहले शुरुआत में ही कहा जाएगा हरियाणा 3 और हिमाचल 10। हिमाचल अपना पहला मुकाबला 31 के मुकाबले 32 अंकों से हारी थी महाराष्ट्र से, लेकिन उसके बाद बिहार को उन्होंने 17-41 से हराया, और उसके बाद जो उनका अंतिम मुकाबला था, उन्होंने मेजबान गुजरात को 16 के मुकाबले 47 अंकों से पराजित किया था और सेमीफाइनल में खेलने का अधिकार पाया। तो इस समय ऑल आउट होने के बाद अब एक बार फिर से हरियाणा की टीम तैयार है। हिमाचल की टीम काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। हिमाचल के खिलाड़ी, नवीन, अगर बॉडी बिल्ड की बात की जाए तो हिमाचल के खिलाड़ी काफ़ी मजबूत हैं, और यहाँ पर रेड करने के लिए हरियाणा की तरफ से इस समय आई हैं एकता, और देखना यह है कि क्या एकता यहाँ पर अंक हासिल कर पाती है या नहीं। Yeah, very strong built defense team there by Himachal Pradesh. And a running hand touch on right corner. Gets her defender, and also there should be something that is happening. 2 more points being given away because one defender is stepping outside the end line. There you see the right corner stepped out of the end line, and that's why the right end also could not come in with the chain. So when the chain has been gone broken there, and that is where the uncontrollable situation of a defender stepping outside the end line. That's why those 2 points. और अब हिमाचल की तरफ से अटैक, आक्रमण करने गए हैं हिमाचल की तरफ से 4 नंबर जर्सी में निधि शर्मा, जो कि रेडर है। अभी तक अंक हासिल नहीं कर पाए, केवल 11 सेकंड का समय शेष। क्या यहाँ पर वो अंक हासिल कर पाएंगे? लेकिन नहीं, और 5 के मुकाबले 10 अंकों से हिमाचल प्रदेश इस समय आगे चलता हुआ, और लगभग टाइम आउट लिया गया है। कुछ चेतावनी दी जा रही है रेफरीज के द्वारा। Yeah, you cannot coach or shout when the raider is in your court, because only one defender is allowed to talk, whether the captain or the proper defender who's going to manage those defense. Only one player is allowed to talk. Everybody can't be talking. That is where the verbal warning. Unfortunately, there Himachal Pradesh will be saying, okay, we have done well on the mat, but we'll have to control on the proceedings of the game as well. It's a big lead. Half of the points being scored away. Trying her best in front of the right corner. They have been very good, the Himachal Pradesh's defense, because they haven't let the raider come inside deeply. And also, Kulwinder, the only good aspect, or rather the exciting aspect for me, is where a raider can also go ahead and probably also defend. So when that is happening, it's nothing like a best player in the making. और अब पुष्पा ने टच किया है, यहाँ पर अंक हासिल करेंगी। दायां पैर आगे की तरफ टच करके उन्होंने पैर को टच किया और 1 अंक हासिल किया अपनी टीम के लिए। 5 के मुकाबले 10 अंकों से हिमाचल प्रदेश आगे चलता हुआ। और अब हरियाणा की तरफ से रेड करने के लिए आई हैं इस समय 10 नंबर की जर्सी में प्राची लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर में जाने की कोशिश करती हुई, लेकिन डबल डिफेंस जो है पूरी तरह से उनको बांध के रखा। क्या यहाँ पर अंक हासिल कर पाएंगे? यहाँ पर कम से कम 2 अंक जरूर मिलेंगे। उन्होंने प्रॉपर होल्ड नहीं किया, प्रॉपर आगे से सामने से चेस्ट होल्ड नहीं कर पाए, और उसके बाद उन्होंने अंक हासिल किया। The ankle hold was very weak, and also the support came in very wrong time in that making, because they had to go for the upper body rather than onto the knees. The support had to come, taking care of the dangling hand was so important. जबरदस्त गेम हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच। 2 points been going away.
successive decision that has to Scores come in right from the now, right corner Haryana, and the 7 left cover. points. If that does not Himachal happen, Pradesh, 11 this is how, points. 2 points will be taken off. Much needed. I think they will go back and review. Yeah, there is a review as well coming up. There's a review that they want to go for it. Let's go for the review and see what they want to know. Right, 2 points given away, but Haryana also wants bonus +2. So now it is all about whether they will get the bonus point or no, as the officials will look at it in the proper angles. And it is a very, very good review because Ekta went in strong. She got 2 points, but is a bonus coming in is a big question. After the tackle was very unsuccessful, pushed into the lobby, but then utilized as a lobby, goes across the midline. Again, watching it once again very carefully, the officials are Yadav ji, who was there as a very, very good jury member in 36th National Asian Games, and also making sure this Asian Games goes along very nicely. Oh, there you go. Super raid for Haryana once again. Bonus +2 makes it 3 points, and very, very good review taken. So that is a proper way of taking a review and making sure the points comes to you. और अब इस समय निधि शर्मा गई हैं अपने दाएं कॉर्नर बाएं कॉर्नर पर, राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, लेकिन डिफेंस बहुत मजबूत है हरियाणा का और कोशिश उनकी कि वो अंक हासिल कर पाएं। क्या यहां पर अंक मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। अभी तक 8 के मुकाबले 11 अंकों से हिमाचल प्रदेश आगे इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में 36वें राष्ट्रीय खेलों का अहमदाबाद के एक स्टेडियम पर। और अब इस समय हरियाणा की तरफ से 9 नंबर की जर्सी में गई है पूजा, लंबे कद की खिलाड़ी, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर दोनों तरफ मूवमेंट बनाती हुई क्या अंक हासिल कर पाएंगी। और यहां पर बिल्कुल सामने से Now why the referees ran is because jersey pulling. If you've been allowed that to do, the raider is not out. There we go, watch that. When the left corner comes across, she pulls the jersey. No jersey pulling. Very, very clearly noted by the referees. आप जर्सी भी पुल नहीं कर सकते, आप गर्दन को भी होल्ड नहीं कर सकते। That point rewarded to Haryana. What a fight back. Haryana no points. Himachal 9 के Pradesh मुकाबले 11. 11 अंकों से इस समय हिमाचल, और यहां पर रिव्यू मांग लिया गया है। When the jersey pulling happened, you just can't go for the review and ask that same thing, because there we go, left corner came across well, went into Pooja, and there it's very clear on the jersey pull. But they want the review to say they're challenging the jersey pull, and that is very unlikely because the referee ran in on the court because there was a jersey pull. और रेफरी बहुत पहले से दौड़ पड़े थे, उनको दिख गया था कि इस साइड से कि जर्सी को पुल किया और काफी दूर तक जर्सी को खींचा था रेडर को, अटैकर को रोकने के लिए, रेडर को रोकने के लिए, और यहाँ पर ये रिव्यू और ये रू गवा दिया। Yeah, as clearly Kulwinder, because it was Sakshi Sarma there from the left corner. They will not have a review in this half. So you cannot challenge the referee's jersey pulling decision, can you? बिल्कुल सही। और इसके साथ हिमाचल की तरफ से अब निधि गई है अटैक करने के लिए रेडर बनकर, और क्या यहाँ अंक हासिल कर पाएंगी। और उन्होंने टच किया है, अपने दाएं पैर को आगे बढ़ाते हुए टच किया है। क्या यहाँ अंपायर की तरफ देखते हुए, रेफरी की तरफ देखते हुए कि क्या यहाँ पर निर्णय होगा, लेकिन अभी भी एक बार फिर से कोशिश, और इस बार टच करने में सफलता हासिल की, 1 अंक हासिल किया। 9 के मुकाबले 11 से हिमाचल आगे। Twice Kulwinder, she went in for the toe touch. First on the left cover, then on the right corner. The left cover said, no, you haven't got your toe touch on me. And then she went across to the left corner, got that toe touch, beautifully done. और यहाँ पर क्या ये अंक हासिल कर पाएंगे, हरियाणा की तरफ से रेडर गई थी। और अब बातचीत करते हुए रेफरी। Absolutely, the referees also will get into a small discussion. That's an official timeout that they'll be taking in, and probably see and check if they can probably have that touch point going, because it is a very, very important decision, as the Himachal Pradesh are just leading this by just 3 points. The decision hasn't come yet. We'll have to see if there is. Oh, there we go. Himachal Pradesh gets a point and the raider has been given out. Oh, that's a running hand touch that was attempted and went in vain, as Kulwinder has gone out for a break and been joined by Mahesh Tiwari. Mahesh, it's going to be a very tough semi-finals too than the first one, isn't it? It's going very neck and neck. बिल्कुल बिल्कुल, केवल 3 अंकों की यहाँ पर बढ़त हासिल है हिमाचल प्रदेश के पास, हरियाणा के 9 और हिमाचल प्रदेश के 13 अंक। लेकिन ये कांटे की संघर्ष होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं।
दाहिने छोर पर वहाँ पर बाएं कॉर्नर पर अटैक करने की कोशिश की थी और एक अंक अर्जित करती हुई लौटी वहाँ पर हिमाचल प्रदेश की टीम और एक अंक से साथ स्कोर आगे बढ़कर हिमाचल प्रदेश का 14 के मुकाबले 9, 5 अंकों की बढ़त कोई ज़्यादा बड़ी बढ़त नहीं है कि कबड्डी में कभी भी इसे पूरा किया जा सकता है नवीन, कभी भी ज़्यादा अंक अर्जित करके टीम आगे बढ़ सकती है। जिस तरह से पहले सेमीफाइनल को हमने देखा जहां महाराष्ट्र की टीम ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर ली थी, उसके मुकाबले ये थोड़ा सा संघर्षपूर्ण मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। स्कोर का डिफरेंस बढ़ता हुआ, हरियाणा 9 points, हिमाचल प्रदेश 14 points. So strong players, especially the players like Pushpa, who can put across such a strong ankle holds and also raid. That gives you so much confidence. Pushpa actually managing the hold. 5 minutes 32 seconds remaining in the first half. And it's only 4 defenders on court now for Haryana. Is all ready to raid in. Left raider, much needed. Touch point that she'll have to get in is Antim Kumari. Goes across, ties the bonus. Yes, because she can do it. 6 defenders on court. But will she be successful? Goes across again for a sweeping kick. Does not get it. She has to attack the left flank immediately. On the right corner, putting across a strong footwork. Antim Kumari goes back empty-handed. No bonus as well. बिल्कुल केवल राइट कॉर्नर में ही उन्होंने अटैक किया था और ज्यादातर जो रेडर्स देखने को मिले हैं अनवीन, इसमें राइट कॉर्नर में ही अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, यहाँ भी राइट का जो लेफ्ट कॉर्नर है वहां पर अटैक होता हुआ देखने के क्या यहाँ पर अंक अर्जित कर पाती है, लेकिन घूमते बीच में बहुत अच्छी तरह से होल्ड किया वहां पर और ये होल्ड की वजह से यहाँ पर अंक अर्जित होगा हरियाणा के पक्ष में। Diving ankle hold comes across very strongly from that left in position. Look at that, it's a surprising diving ankle hold, did not expect it. Antim Kumari, who went in for the raid, a raider putting across such a strong ankle hold is really appreciable any single day of a Kabaddi game. Now once again it is going to be Prachi. I've also seen Prachi in the Khelo India University games, Mahesh, because that was the time where you had a lot of players coming up from universities and to play the state. And now, when she's representing Haryana in the national games, this is another level that she's reached. And that is why Himachal Pradesh are on 14 now. बिल्कुल, इस तरह से छोटे-छोटे जो टूर्नामेंट्स होते हैं, इसके बाद में खेलो इंडिया के माध्यम से खिलाड़ी अपने आप को निपुण बनाते हैं, चालाक बनाते हैं और जब आगे बढ़ते हैं तो यही दरवाजे खोलते हैं उनके आगे बढ़ने के नवीन। And of course, talking about all the big franchisee leagues we have, they've been also trying to see there can be a female edition of that as well. So why not? A lot of opportunities here for the girls. Now it's a do-or-die raid, and it has to be said she's got a gap across, but no, ankle hold was strong, and then also the support came in at the right time. It was a do-or-die raid. There was pressure there on the raider. She made sure she went inside well, but Prachi did not get the retrieving angle right. She did not get the angle right outside the midline. She had to probably turn towards the lobby, utilize the lobby, and then go through towards the midline. That was a little lacking there. बिल्कुल, बहुत अच्छा होल्ड किया था। दोनों पैरों को जब होल्ड हो जाता है तो खिलाड़ी मूव नहीं कर पाता। यहाँ थोड़ी सी नजरअंदाज करती हुई नजर आ रही। जब आप रेड कर रहे हो तो आपका ध्यान अपने विपक्षी टीम के अटैकर पे होना चाहिए कि डिफेंडर पे होना चाहिए, लेकिन वैसा होता हुआ नजर नहीं आया। वही गलतियां हो रही है यहाँ पर। It was a strong pursuit by Ritu from left corner. All the corner defenders, we see them going in and attacking immediately when the raider is looking little low. Look at that toe touch. Wow, that's a strong one from left cover. Left cover, and it's a strong defender going out. Pushpa, who can manage any position on that Kabaddi court, has to go out now. Himachal Pradesh has to understand that a strong player has gone out. Look at that, Mahesh, in that left cover position. Strong toe touch. Fabulously done by a left corner defender. बिल्कुल, बहुत चालाकी के साथ, फुर्ती के साथ, एक पलक झपकते दिखाया बाईं तरफ और बीच में अटैक करके उन्होंने अंक अर्जित किया। बहुत बढ़िया, 15 के मुकाबले 11 अंक। यहाँ पर एक अंक और यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बहुत कड़ा संघर्ष यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच में। Once again, look at that. The raider goes in very deep. And it was all the defenders' marks because the raider was doing it well, keeping her legs away from the diving ankle hold. But then it was a strong ankle hold by Ritu on that left corner position. बिल्कुल, और यहाँ पर दाहिनी छोर पर आक्रमण करी और पकड़ने की कोशिश की थी और बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर एंकल होल्ड करने के बाद 2 अंक वहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बहुत एक अंक मिला है वहाँ पर नवीन, और 1 अंक के साथ वहाँ पर पहले फिसलती हुई नजर आई। ऐसा लगा कि शायद निकल जाएंगी, लेकिन जिस तरह से कवर अप किया कॉर्नर में और उसके बाद जिस तरह से होल्ड किया, उसके बाद वो अंक वहां पर अर्जित करते हैं। 16 always important, Mahesh, when you have other people surrounding and supporting, and then
the team forms in a very strong way. इसीलिए तो टीम गेम इसे कहा जाता है. Absolutely, and everything, not just the game, everything is a team effort. Come on, Where you Ahmedabad. need to आप correlate सब and लोग coordinate full power, instead of full putting जोश you के first साथ. up every जब मैं time. कहूँगा, It's not in Kabaddi. जुड़ेगा Definitely इंडिया. not. You just आप can't play a कहिए, single-handed जीतेगा game. इंडिया. Everybody Are you needs to come ready? together. You guys know 823 रमी पे नीरज का नाम है बादशाह 123. बताना आज इतना नाराज क्यों है? Because I lost. किससे? आपसे. तो असली बादशाह कौन? आप हो. Because I'm the best. I'm the best. Play with the Bashas of Rummy on 823. चलो साथ खेलें. Download from 823.com. इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है. जिम्मेदारी से खेलें. कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत होती है. जो खिलाड़ी बहुत देर तक साथ में खेलते हैं नवीन, उनका जो कोऑर्डिनेशन बनता है, जो एक दूसरे के साथ एक सूत्रता बनती है, उसी का नतीजा निकलता है जब इस तरह के खेल होते हैं. जब बहुत देर तक कोई खिलाड़ी जो टीम साथ में खेलती हुई नजर आती है तो इस तरह से होता है. लेकिन 4 अंकों का फासला अभी भी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है हरियाणा के लिए. Absolutely, I'll tell you something else. This is going to be the pressurous second semi-final. Maharashtra has already reached the final. Who will be playing against Maharashtra tomorrow is a big question. Is it going to be Himachal Pradesh? But for that, they'll have to hold on to that lead. 4 points, and the lead is kind of going down because Pushpa is off court. Pushpa, being their star player today, is just off court now for this while. And now it's going to be Jyoti who will be trying her best. Left raider goes across, attacks the right corner, then turns away, attacks the left flank, gets her running hand touch, and cannot keep her away. Ritu just cannot pull her left leg back. See, the running hand touch was so nice. The brakes were applied on the right occasion. And there we go. She attacks that left corner so easily. And the legs not going back in time of Ritu. That's the mistake. बहुत फुर्ती के साथ, चुस्ती फुर्ती के साथ वो पलक झपकते जो अंक लेने की कोशिश की थी उसमें सफल हुई. और यही चतुराई होनी चाहिए, यही चपलता होनी चाहिए. 51 सेकंड का खेल अभी बाकी है इस पहले हाफ में. लेकिन 17 के मुकाबले 12, 5 अंकों की बढ़त यहाँ पर हिमाचल के पास है. लेकिन ये बढ़त इतनी बढ़त नहीं है नवीन कि वहां पर राहत की सांस ली जा सके. राहत की सांस, I'll tell you what that means. It's a big one for Himachal Pradesh because Pushpa has been revived. बिल्कुल, Pushpa is back on the court and she can now really get along that Himachal defense very nicely and get a strong point. Good strong toe touch. I like that reflexes. Very quick on her feet, very nimble, very agile. Number 3 for Himachal Pradesh in the making, and she probably already knocking the doors of the national team, isn't it? बिल्कुल बिल्कुल. अच्छे खिलाड़ियों की मैं समझता हूं कि इस तरह से पहचान होती है इस तरह से टूर्नामेंट में. और ये जो राष्ट्रीय खेल खेले जा रहे हैं इसका मकसद ही ये है कि साथ साथ खेलो. जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया. तो निश्चित रूप से ये आगे बढ़ते हुए सारे खिलाड़ी नजर आएंगे आने वाले भविष्य में. लेकिन फिर से पुष्पा वहां पर रेड करती हुई हरियाणा की तरफ से 13 के मुकाबले 17, 4 अंकों की बढ़त अभी भी हिमाचल प्रदेश के पक्ष में है. देखना है कि दाहिने छोर में राइट कॉर्नर में जो उन्होंने अटैक किया है वहां पर क्या वो अंक लेने में. It's going to be that last raid on that left corner on that number 3 occasion where a right raider always attacks, and that is a 5-minute break in the first half. It's a very good lead Himachal Pradesh is holding on to because it is Pushpa. Because of Pushpa and also Jyoti's efforts that somewhere Himachal Pradesh has kept a little, I could say, their nose ahead only, not every bit of the match. They just have a small slender lead, and that will not be very huge if Haryana can make a very good comeback in the second half. As we watch in some high points of the first half, we saw a lot of raiding that has been happening on the left to right of the flank, been attacking there, and then the defense was the very important weapon of Himachal Pradesh because the dash, the angle holds came very nicely, and there the defensive error of Haryana has made sure Himachal Pradesh is in the lead. I always say this, Mahesh, in raiding you only win a war, in defense you win a battle, so your defense has to be really nice. बिल्कुल बिल्कुल. ये जो टीम गेम की बात होती है और यहाँ पर ये जो गलती हुई थी आपने कहा था कि होल्ड जो जर्सी पुलिंग जिसे कहते हैं वो नहीं अलाउड है. तो ये सारी जो लेकिन खेल जब गर्मी के साथ खेला जाता है तो ये सारी गलतियां अपने आप होती हैं. भले खिलाड़ी सभी नियम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जोश और उत्तेजना इतनी ज़्यादा होती है बीच मैदान पे नवीन कि उस समय खिलाड़ियों के हाथ से जानते न जानते वो गलतियां हो जाती हैं. Yeah, see, I'll tell it is very unintentional. It is not intentional at all. It is very, very unintentional. And because it is such a strong contact sport, we have a set of rules that has to be followed by every player. It's very clear that, you cannot go away from the rules as we have a 3 minutes 10 second still remaining for the second half to start. नवीन, मैं आपका ये एक्सपर्टाइज चाहूंगा
कि अभी तक आपने हिमाचल प्रदेश की टीम को खेलते हुए देखा है, आपने पुष्पा को और ज्योति को कम बैक करते हुए देखा है, तो आप ये समझते हैं कि 4 अंकों का फासला ये इतना बड़ा फासला है कि यहाँ पर राहत के साथ हिमाचल प्रदेश की टीम ले पाएगी? Very good point by you, Mahesh. Very good point. See, I'll tell you something. If Haryana has to make a comeback, they have to understand they have to be away from Pushpa, both in the raiding and in the defense, because Pushpa is that kind of a player, because she can manage the team very well even during the raid, and she manages right cover and right corner, both the positions. So when you have such a sort of a player, you have to understand that you need to avoid such players when and wherever possible. So go in and attack more on the left flank, and when Pushpa comes into raid, do not go and attack her from your end. Don't put in those advanced tackles. Let Pushpa come to you. And if you get the right angle, go for the dashes, go for the angle. Number 3 is what I'm talking in the black and white. And number 3 for Haryana, of course, is Parveen. But number 3 for Haryana in black and white is Pushpa. That is a player that Haryana should be keeping away from. बिल्कुल, और मैं समझता हूं कि जब तक आपको स्पर्श करने की कोशिश न की जाए रेडर द्वारा, तब तक उसे आप अगर होल्ड नहीं करें तो बेहतर होगा, क्योंकि लेकिन ये 4 अंकों का फासला अगर आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक हो जाते हैं, तो भी एक घातक हो सकता है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के लिए। आपको आक्रामकता और आपको डिफेंस दोनों को बरकरार रखना होगा। Also, what Haryana should really be careful now is they have been left only with 4 defenders on court. So when you only have 4 players on court, Himachal Pradesh will be trying to go for the all-out. Definitely they want to inflict the all-out on Haryana very soon. See, only 4 defenders on court. They have to discuss it amongst themselves to try and see if they can play in the defense of 4 and 5. What does that also means is you are taking the bonus away from the game. So when you are playing only with the defense of 4 and 5, there is no bonus point available for the opposition. So you can make a very good case out of it. But if you lose another defender on court, it's going to be that super tackle defensive skills that you have to play on. So आप बोल सकते हैं कि घुमा फिरा के whatever it happens is Haryana has to do a proper defensive skills. बिल्कुल, Their और defenders have to fire. बिल्कुल, और यहाँ पर बहुत ही इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे। जहाँ पर हाफ टाइम हुआ है तो वो इंस्ट्रक्शन के साथ में यहाँ पर खिलाड़ी अब खेलते हुए नजर आएंगे। देखना है कि क्या इंस्ट्रक्शन, क्या हिदायतें, क्या सूचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। और यहाँ पर दाएं राइट कॉर्नर में अटैक करती हुई वहाँ पर हिमाचल प्रदेश की खिलाड़ी, लेकिन अंकों की तालिका 17 के मुकाबले 13 अंक, यानी 4 अंकों का फासला यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के पक्ष में। यहाँ पर स्वागत करता हूँ कुलविंदर सिंह कन का, जो कि यहाँ पर आए हैं नवीन की जगह। और कुलविंदर, क्या सोच रहे हैं आप? 4 अंकों का फासला कोई ज़्यादा बड़ा फासला नहीं है हिमाचल प्रदेश के लिए? देखिए महेश, ज़्यादा बड़ा फासला ये नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, और ये होल्ड किया है, रोक लिया गया है, एंकल होल्ड किया शानदार तरीके से हरियाणा की तरफ से। और 3 नंबर की जर्सी में पुष्पा को पहली बार यहाँ पर टैकल किया है और शानदार तरीके से एंकल होल्ड किया, और फ्रंट पे जो स्ट्रेच करके वो बाजू टच करना चाहती थी, सामने से होल्ड किया और अंक हासिल किया। तो इस तरीके से हरियाणा भी अब वापसी करता हुआ 14 के मुकाबले 17 अंकों से पीछे, और अब अटैक करता हुआ हरियाणा की तरफ से 6 नंबर की जर्सी में प्रियंका गई हैं अटैक करने के लिए। इस समय लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर की तरफ बढ़ती हुई, क्या यहाँ पर टच कर पाएंगी? बोनस भी ऑन नहीं है, इसलिए कोई ज्यादा हिमाचल के खिलाड़ी यहाँ पर वो दिक्कत नहीं दे रहे। और इसके बाद एकदम काउंटर अटैक किया गया हिमाचल की तरफ से, खिलाड़ी को टच किया गया, 1 अंक जरूर मिलेगा। और इसके साथ ही 1 अंक हासिल किया हरियाणा की खिलाड़ी 6 नंबर की जर्सी में इस समय बाहर गई प्रियंका। 18 के मुकाबले 14 अंक, और जिस तरह से यहाँ पर आक्रमण हो रहा है यहाँ हरियाणा की तरफ से वापसी करने की कोशिश, लेकिन डू और डाई की जो रेड है, ये देखना कि यहाँ पर क्या सफल अर्जित कर पाती है। और ये बहुत ही अच्छी सफलता वहाँ पर अर्जित की है, और कितने अंक मिलेंगे ये देखने लायक बात होगी, क्योंकि अभी तक 2 अंकों का इजाफा हुआ वहाँ पर हरियाणा के पक्ष में। और किस तरह से वहाँ पर ग्रिप करने की कोशिश की थी, जिसे होल्ड करने की कोशिश की थी, बाहर फेंक दिया था खिलाड़ी को एरिना के जो कोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद 2 अंक अर्जित करते हुए वापस लौटे। 18 के मुकाबले 16। गैलरी जो होती है वो भी जब पकड़ लिया जाता है या रोकने की कोशिश की जाती है, गैलरी भी प्लेइंग एफओ की हिस्सा बन जाती है, एफओपी का। और अब इस समय गई है निधि हिमाचल की तरफ से, रेडर है बहुत तकड़ी, इनसे बच के रहना होगा। और यहाँ पर उन्होंने टच किया, क्या अंक मिलेगा? लेकिन नहीं। और
इनकार किया गया रेफरी के द्वारा। अब इस समय हरियाणा की तरफ से गई है पूजा। पूजा इस समय लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर दोनों तरफ लगातार और टच करने के में सफलता हासिल की, एक अंक हासिल किया। शानदार तरीके से बड़ी तेज गति के साथ फुर्ती के साथ उन्होंने टच करने के बाद वापस अपने पाले में लौटी। इस समय 17-18 बहुत नजदीकी मुकाबला, हरियाणा वापसी करता हुआ दूसरे हाफ में। और इस समय हिमाचल की तरफ से निधि शर्मा अटैक करती हुई दाएं बाएं दोनों यहाँ पर बोनस ऑन है, इसलिए डबल डिफेंस के साथ खेलते हुए इस समय हरियाणा के और बोनस अंक हासिल नहीं करने देना है। और आखिर में हिमाचल को कोशिश ये रहेगी कि क्या यहाँ पर उन्होंने अंक हासिल किया और एक अंक हासिल किया, टच किया दाएं पैर से टो को टच करने के बाद एक अंक हासिल किया इस समय और 19 पर पहुंच गए इस समय हिमाचल। हरियाणा की तरफ से 9 नंबर की जर्सी में पूजा गई है अटैक करने के लिए। पूजा अपने तरफ से वहां पर राइट कॉर्नर पे वहां पर अटैक करती हुई, जबकि 9 नंबर की जर्सी पहनी हुई। देखना है कि क्या यहाँ पर अंकों की तालिका बढ़ा पाएंगे। वहां पर होल्ड किया, काफी तेजी का डिफेंस ने वहां पर जाकर दाहिनी छोर से जाकर उसे ऊपर उठा लिया और यही होना चाहिए, यही कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो यही समन्वय होना चाहिए जो यहाँ पर देखने को मिला। और बहुत ही अच्छी तरह से वहां पर ग्रिप करते हुए उठा लिया था खिलाड़ी को और ये एक अंक के साथ ज्योति आउट होती हुई वापस नजर आई और इसके साथ अंकों की तालिका 20 के मुकाबले 17 हिमाचल प्रदेश 20 अंक और 17 पे है यहाँ पर हरियाणा की टीम। 17 के मुकाबले 20 अंकों से हिमाचल। इस समय निधि शर्मा रेडर के तौर पर गई हैं दाएं बाएं राइट और लेफ्ट कॉर्नर पर। और अभी क्योंकि बोनस ऑन नहीं है इस वजह से कोई ज्यादा खतरा नहीं है और अंक हासिल नहीं करने दिया जा रहा। काउंटर अटैक करते हुए हरियाणा की तरफ से 2 नंबर की जर्सी में स्वाति। और फुर्ती के साथ अगर आप काउंटर अटैक करते हैं तो आप जो रेडर होता है जो वापस अपने पाले में पहुंचता है उसको आप टच कर सकते हैं, लेकिन राइट कॉर्नर में इस समय और अब लेफ्ट कॉर्नर में राइट और लेफ्ट के साथ, लेकिन बिना अंक के वापस आना होगा। अच्छा समन्वय वहां पर दोनों खिलाड़ी अपने तरफ से कभी दाहिनी तरफ कभी बाईं तरफ, बाएं कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर दोनों तरफ यहाँ पर इस समय राइट कॉर्नर में। उसके बाद में बीच में ध्यान, ये कभी कभी जो बात होती है ये सामने वाले प्रतिपक्ष टीम को वहाँ पर नजरअंदाज किया जाता है और वहां पर बीच में ही एक कोशिश की जाती है पैर मारकर अंक अर्जित करने की। तो यहाँ पर बिना अंक के साथ वापस लौटी। तो देखना यह कि यहाँ पर अभी 3 अंकों का फासला जो है वहाँ पर हरियाणा की टाइम आउट लिया गया है। तो 3 अंकों का फासला जो बहुत बड़ा फासला पहले 4-5 अंकों का लग रहा था वो घटकर अब केवल 3 अंकों में तब्दील हुआ। और जब जरूरत पड़ती है तो कोच यहाँ पर टाइम आउट भी लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर बीच में बोलते हैं तो ग्रीन कार्ड दिखाया जाता है और जब लगता है कि टीम गलती कर रही है तो वहां पर इस समय हरियाणा की जो कोच है ज्योति अपनी टीम को दिशा निर्देश देती हुई। और यहाँ बहुत जरूरी है क्योंकि हरियाणा 17 के मुकाबले 20 अंकों से आगे चलता हुआ इस दूसरे हाफ में बहुत ही नजदीकी मुकाबला, बहुत ही कम स्कोर वाला मुकाबला कहा जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर अब रेड करती हुई अंतिम कुमारी और बहुत जल्दी वापस आई 1 अंक के साथ और 2 अंक अर्जित करती हुई। 2 डू और डाई रेड है ये, क्योंकि तीसरा अटेम्प्ट जो होता है बिना अंक के साथ अब जब लौटते हैं तो डू और डाई रेड होती है, वहां पर आपको करो या मरो की स्थिति होती है और वही यहाँ पर अब है। जरूर यहाँ पर अंक अर्जित करने की कोशिश करेंगी हिमाचल प्रदेश की ये खिलाड़ी निधि शर्मा। निधि शर्मा को कैच कर लिया गया है, डू एंड डाई रेड थी, करो या मरो की स्थिति थी और इस तरीके से यहाँ पर 2 पॉइंट्स का सुपर टैकल किया गया। हरियाणा का स्कोर 18। हैंडल 18-20 से हिमाचल आगे। अब हरियाणा की तरफ से इस समय प्राची गई हैं रेड करने के लिए, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे पहुंच चुकी हैं और क्या यहाँ अंक डू और डाई रेड है ये हरियाणा के लिए भी और हरियाणा की डू और डाई रेड में अंक हासिल करना बहुत जरूरी है और कोशिश करते हुए हिमाचल के खिलाड़ी। और यहाँ बहुत मुश्किल होने वाली है क्योंकि सामने से टैकल किया, सामने से हैंडल किया और इस तरीके से 1 अंक हासिल किया इस समय हिमाचल ने। हिमाचल 18 के मुकाबले 21 पर पहुंचा आगे। ये देखिए किस तरीके से सामने से टैकल कर लिया गया और उसके बाद कोई मौका नहीं था और पूरी तरह से उन्होंने ध्यान हटा लिया था पीछे से भी खिलाड़ी आ सकता है। पूरी तरह से सचेत रहकर आपको खेलना होता है और यहाँ पर रेड करती हुई वही खिलाड़ी पुष्पा जो कि बहुत आक्रामक और बहुत तेज और नामचीन खिलाड़ी है जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है।
और ये खिलाड़ी का आउट होना मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश को बर्दाश्त नहीं होगा। 1 अंक तो उन्होंने अर्जित कर लिया है और 1 अंक के साथ स्कोर की तालिका आगे बढ़कर 21 के मुकाबले 22 के मुकाबले जी 22 अंक हासिल कर लिए हैं। 22वां ये अंक था, 18 के मुकाबले 22 अंकों से आगे। और अब टाइम आउट लिया गया है इस समय हिमाचल प्रदेश की तरफ से। हिमाचल प्रदेश के जो कोच हैं रानू चौहान, वो दिशा निर्देश देते हुए, और इधर हरियाणा की टीम की कोच ज्योति भी अपने खिलाड़ियों को दिशा निर्देश देती हुई। ये करो या मरो का मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला है यहाँ। ये दूसरा सेमीफाइनल है। पहले सेमीफाइनल में महाराष्ट्र की टीम ने तमिलनाडु को पराजित करके फाइनल में खेलने का अधिकार पाया, और यहाँ पर थोड़ा नजदीकी मुकाबला कहा जाएगा महेश। जी 12 के मुकाबले 18 के मुकाबले 22 अंकों से हिमाचल आगे है, तो इस अंतर को पाटा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत ही आसानी के साथ इसे पूरा किया जा सकता है। इस बार रेड करते हुए यहाँ पर हरियाणा की 8 नंबर के जर्सी पहनी हुई खिलाड़ी जो कि हैं यहाँ पर अंतिम कुमारी, काफ़ी रेड्स उन्होंने किए हैं यहाँ पर आक्रमण करती हुई दाहिने छोर पर, दाहिने कॉर्नर पे उनका पूरी तरह से कोशिश थी आक्रमण करने की, और पूरी तरह से दौड़ती हुई पीछा करती हुई मानो वहाँ पर कोशिश की जा रही है हिमाचल प्रदेश की खिलाड़ी द्वारा रेड करने की। 22-19 3 अंकों का फासला यहाँ। काउंटर अटैक बहुत तेज गति के साथ किया गया इस समय हिमाचल की तरफ से ज्योति के द्वारा, जो कि अपने दाएं हाथ पे पीला बैंड बांधकर खेलती हुई, और यहाँ पर केवल 2-2 के डबल डिफेंस में है, लेकिन सफलता उनको नहीं मिली। क्या यहाँ पर अब हरियाणा की जो खिलाड़ी हैं इस समय गई हैं अटैक करने के लिए, रितु रेड करने के लिए गई हैं, क्या रितु को यहाँ अंक हासिल होगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। बोनस अंक यहाँ पर ऑन है, क्या बोनस ले पाती है नहीं, और पूरी डिफेंस मजबूत है इस समय हिमाचल की। 19 के मुकाबले 22 अंकों से हिमाचल आगे। ये दूसरा चल रहा है, ये पहला सेमीफाइनल है और दूसरा हाफ है, और केवल 6 मिनट 50 सेकंड का समय शेष है। स्वागत करता हूं एक बार फिर से नवीन शोरी का। नवीन, बहुत नजदीकी मुकाबला दिखाई दे रहा है इस समय ये। Kulvinder, the only reason is number 3 here in the black jersey, that is Pushpa. She's made all the difference. Once again, reaches very strongly in the defense of 5. You cannot make it happen there. And then even with the defense of 4, it's becoming very difficult for a raider. But look at her reach. Look at the confidence that she went in for the kick on that right corner. और हालांकि ये लड़कियों का मुकाबला है, पुष्पा है, झुकेगा नहीं, हर बार अंक हासिल करती है। That is the trending thing all across India now, and it has also found way in the national games. Now very well connected, much needed. But then, अब हरियाणा को यहाँ पे अंकों के मामले में झुकना नहीं है. That's the only point. She even there. Oh, that's a wrong error. That was not required. From the left-in position, when you are a good raider, why do you have to put in such a weak tackle? And when Pooja was not even trying to get a point, she was just trying to show her footwork. Look at that. ये देखिए अंतिम कुमारी थी, और जिस तरीके से एंकल होल्ड करना चाहती, बस वीक होल्ड किया, और उसके बाद वो निकल कर भागी, अंक हासिल किया. Now just making sure this is going to be a very, very tight game in the second half. Just the left raider trying her best on that right corner, gets in deep, and then what a raid! Fabulously done. The raider is out, is what the decision from the referee is. You cannot keep arguing. You will be given green card, and also red card will be awarded. You cannot argue with the referees also there. But the dash came in strongly, was the decision that came across from our referee. First one, very clearly. They have got into a little bit of a discussion. It'll be very interesting to see what happens. और दूसरी बात, अगर आपको कोई ऐसा है तो आप रिव्यू ले सकते हैं, लेकिन आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते. Very well said, Kulvinder. That is what you need to do. You just need to understand that you need to respect the game and the referees, and that is what it's going to be. That is the final decision that's going to happen. We'll have to see what happened there. Once again, each 1 point is a decision there. Each 1 point is a decision. Goes in for the hand touch, gets it, and then gets inside the lobby as well. So there we go. She's actually claiming that she's touched the right corner defender, and then she's gone inside the lobby. But then it has also been given as each 1 point, because there the right corner defender, now they will go for the review. They're also getting the green card for over arguing. This is what I was mentioning, Kulvinder. जी, और ग्रीन कार्ड यहाँ तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये है कि यहाँ पर जिस तरह से आज नजदीकी मुकाबला 21-23 से इस समय हरियाणा पिछड़ा हुआ. See, I understand it's the semi-finals, but you'll have to also keep your nerves and keep yourself calm. Now Pooja goes in strongly and trying to get something across into that left flank, and then right corner standing so deep. Watch that. She's not allowing the legs to come in across, and then left corner comes in with a strong block, and Pooja has to go down fighting in the lobby.
That is the angle that you really wanted. Once again, who's that? Number 3, Pushpa. Let's keep that name in your mind. There we go. She comes across so well from that left cover and there from the right corner also. There is the ankle hold that is coming in so strongly with the block. And Dimple and Pushpa, both of them. पुष्पा पहले कैच करना चाह रही थी लेकिन सामने से कवर किया, डिम्पल ने पुश किया, पुश करके अंदर ले गए। और लॉबी के अंदर अगर आप टच करना है, टच करने के बाद आप लॉबी के अंदर जा सकते हैं, जब तक आप टच नहीं करते अंदर आप लॉबी में नहीं जा सकते। Absolutely, that yellow strip is not active even before you touch a defender or in contact with any sort of the defender's shoes, jersey or even the kit. So that is the rule of Kabaddi, and now it's just going to be who will blink the eye first is the question, as we have Nidhi Sharma raiding in. Smart move, very smart move. 3 points. They want to play on a do-or-die raid now. They want to push Haryana onto the do-or-die raid situation now, Kulwinder. और इस समय हरियाणा के लिए बहुत ही करो या मरो की स्थिति, डू एंड डाई रेड है ये। और हरियाणा की तरफ से नंबर 8 की जर्सी में गई हैं इस समय अंतिम कुमारी, और यहां पर उनको अंक हासिल करना पड़ेगा। They will be inflicting the do-or-die raid in the next raid, so that is what will be happening. This is fine for Antim, and she gets it, is it? No, she's happy with the bonus. Oh, I'll tell you, this is the biggest point because she's pushed the do-or-die raid away. Exactly, क्योंकि अगर वो नहीं लेती तो डू एंड डाई रेड पे जाना पड़ता, और इसके बाद उन्होंने बोनस अंक हासिल कर लिया है। तो यहाँ पर एक बार फिर से अब हिमाचल प्रदेश की तरफ से गई है 11 नंबर जर्सी में भावना इस समय राइट कॉर्नर पे, और उसके साथ कैच कर लिया गया, डबल एंकल होल्ड किया गया, और इस तरीके से हरियाणा के लिए 1 अंक हासिल किया गया। 23 के मुकाबले 24, बहुत नजदीकी मुकाबला। सेकंड हाफ ये देखिए किस तरीके से from the right in position, very tough, and the raider will always be put under a lot of shock. She will be only accepting the right corner or the right cover to come in, but when it happens from the right in, raider is taken by total surprise. और दूसरी बात नवीन ये भी है कि उनका बैक मध्य रेखा की तरफ थी। अगर फ्रंट होता तो आप कोशिश कर सकते थे डाइव लगाने की, आप बैक में अगर आते हैं तो आप गिर सकते हैं, आप बैक आ नहीं सकते। And also the diagonal movement there, Kulwinder, because you are facing the lobby and it is under your eyes that the right in position is coming and going in for the ankle holds. So that is what happens. And in the timeout, the coaches would have been said, okay, listen girls, it's the position of the finals. We need to go and meet Maharashtra in the finals tomorrow. That is what both the coaches would have told. और अक्सर फिल्मों में क्या ये इसके साथ ही ये हिमाचल प्रदेश की टीम ने हिमाचल प्रदेश के नाम 1 अंक हासिल किया। Jyoti there going for the double thigh hold. Very strong double thigh hold by Jyoti. And the raider did not have any answer with that, even though it was Prachi, a very strong raider. Look at that. She once again turned across in a wrong direction. She was just starting to take her position and go back, and it was a very strong thigh hold. A double one, and Prachi did not have any angle to come back. And Kulwinder, I was just talking about Prachi. I've seen her raid in the Khelo India University Games. She's a fabulous raider. And also in the Maharashtrian team that played in the last semi-finals, it was Sonali who took the game away for her university when she was playing. So these names are actually knocking the doors on the Indian lineup. अंतिम कुमारी गई हैं, अंतिम प्रयास है यह हरियाणा का पीछे चलती हुई, और यहाँ पर अंक हासिल किया है अंतिम कुमारी ने। नजदीकी मुकाबला होता हुआ 24 के मुकाबले 25 अंकों से, और पुष्पा आउट होकर बाहर गई हैं। ये सबसे बड़ा एक अंक भी मिला, और एक सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है वो आउट होकर बाहर जाकर बैठा है। She's gone outside the court, and this is really important for Haryana to notice this. You know, keeping Pushpa away from the mat. Himachal Pradesh is actually 80% strong, I'll say. And Pushpa coming back will be 150% on that Himachal Pradesh's lineup. As once again, it goes back as an empty raid. And Jyoti just put in a solitary empty raid. And now they want Himachal Pradesh to play on the do-or-die raid. This is mind games. There you go. That's the do-or-die raid I was mentioning about. बिल्कुल, निधि शर्मा गई है डू एंड डाई रेड के लिए। क्या यहाँ पर अंक हासिल करेंगे? डू एंड डाई रेड है। निधि शर्मा गई हैं इस समय हिमाचल की तरफ से, और 4 डिफेंडर हैं, कभी राइट कभी लेफ्ट कॉर्नर में जाने की कोशिश यहाँ पर कोशिश होती हुई, क्योंकि बोनस अंक ऑन नहीं है, और इसके अलावा टच करके लौट गई, और ये अंतर डालेगा। केवल 1 मिनट 24 सेकंड का समय। They inflicted the do-or-die raid very nicely, but what happened? Swati from that right corner did not get an angle at all on that raider. Look at that.
Very wrong attempt on that right corner to come across. Did not get the angle, and that's why, even though the do-or-die raid was inflicted, they probably could not get it sorted. I think that should be the tackle of the match for me, as Himachal Pradesh has got it. Comes across on the angle and cuts across. What a raid! They will be counting players now. How many is it? Is it just one or two? Just one. Just one coming in. What a fabulous bit of a raid by Haryana in the penultimate minute of the match. Left corner, comes across, cannot get her hands across, and then goes through the midline as a raider. Priyanka making that big error, and it's a 2 points has been awarded. 2 important points. What a twist. It is Priyanka who's What going a out, turnaround. and also along with Priyanka, it is Swati. So the left corner, left in, everybody has gone out, and I've been joined by Mahesh in this very, very tight game. Mahesh, you've been taking some breaths, yeah? बिल्कुल बिल्कुल मैं पूरे थोड़ा सा रेस्ट लेके आ गया जब तक कि कुलविंदर आपसे ज्वाइन कर रहे थे वहाँ पर रिव्यू लिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्षण है मौका है जब रिव्यू लिया गया है और वहाँ पर निरस्त करते हुए Why? Because Himachal Pradesh lost their review in this half. बिल्कुल They had that one unsuccessful review and they've lost it. So they do not have the review. ये ध्यान में रखना होता है इस पूरे टीम को कि कब रिव्यू लिया जाए इतने क्रूशल इतना अहम पड़ाव है इस मुकाबले का जीतो या मरो की स्थिति है करो या मरो की स्थिति है और यहाँ पर अगर आपको रिव्यू नहीं मिलता है नवीन तो मैं समझता हूँ कि अगर दुर्भाग्य है और यहाँ पर स्थिति ये है कि कुछ भी हो सकता है ऊंट किसी भी करवट बदल सकता है That is why we love this game, isn't it? Because scoreboard के even हिसाब in से the 26 last second of the दोनों 30th टीम minute same for the score. women, we don't know who's going to win. That is what is going to happen. Because I'll tell you something. दोनों Bhavna, teams who का went into points raid, level है has put the raid same. of her life. She's actually जीतेगा made भाई, sure जीतेगा. Haryana is coming in closer towards जीतेगा Himachal भाई, Pradesh. जीतेगा. Because it is just a minute away now from जीतेगा that भाई, जीतेगा. second finalist that will be getting. जीतेगा भाई, बिल्कुल जीतेगा. और ये क्या ये एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा चलिए देखते हैं ये कौन देखने लायक जीता बात है होगी last 1 लेकिन minute. अभी सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर 4 नंबर की जर्सी जिस तरह से अभी ये करेंगे देखिए यहाँ पर Yeah, let me tell you where that yeah, there is nothing on the lines of an extra time. There will be only that bonus line will be becoming the end line and the balk line will become the bonus line if it goes, but no, Himachal Pradesh have got a bonus. Now Haryana wants a review for that. This is really interesting. They have been equalized on that score because of the 2 points of Bhavna. 26 all, and now there's a review for the bonus. Much needed review as we come into Ekta, probably going across and finding it out. There we go. Nidhi Sharma goes for the bonus. But I'll tell you something. I'll tell you something. Let the TV umpire decide. But my comment or my view on this is she's crossing the black line. She's cutting the black line. Look at that. That is not the way you need to do the bonus. No, you have to put your right leg across the black line and have your trailing foot in the air. If you're cutting the bonus line, it is very, very doubtful. So somewhere, Himachal Pradesh will be counting there and probably praying every bit of heavens to come this review to their end. If not, once again, as you said, scores level, it's going to be decided on the last raid. बिल्कुल बिल्कुल और देखना ये है कि ये और जो बोनस लाइन की बात की जो बोनस अंकों की बात की वहां पर नवीन ये नहीं होता कि आपने स्पर्श कर दिया आपको अपना वजन पुट करना पड़ता है वहां पर स्पर्श करके आगे जाना होता है नहीं also you cannot slide your foot. Put yeah, you have to put your foot across the black line. जिसे वेट कहते हैं जिसे वजन कहते हैं कि अपना वजन वहां पर रखना होता है और ये यहाँ पर टीम ने रिव्यू लिया यही देखने के लिए कि क्या उन्होंने स्पर्श किया है या अपना वजन उन्होंने डाला है. Probably again, this is the scoreline that we want to watch, isn't it? In the second semi-finals, my God, marvelous bit of a game here in the second semi-finals. Comparatively to the first one, this is going very neck and neck. Decision coming now. 43 सेकंड का खेल रह गया है और यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है जिसे कहते हैं खून की रफ्तार खिलाड़ियों में भी और जो कमेंटेटर है हमारे साथ में विशेष तौर नवीन का ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता हुआ नजर आ रहा है. तो देखना यह है कि यहाँ पर किस तरह का ये अंक आता है. यहाँ पर हरियाणा 26 और हिमाचल प्रदेश 26. ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला 36वें राष्ट्रीय खेल जो खेले जा रहे हैं यहाँ पर. Mahesh, I'll tell you something. If this review goes towards the Haryana side, then they will probably be happy. Because I'll tell you why. Because they are cutting the bonus line. The raider from Himachal Pradesh was actually cutting the bonus line. So I am somewhere feeling that it is taking a lot of time. So every single point is very important. Haryana will be confident. If they get it, it will not be 27 for Himachal Pradesh. They have to go in,
they will be getting the opportunity to raid. So that is the biggest opportunity to make sure you are putting your hand in the final. If the review goes against Haryana, it's going to be 27 for Himachal Pradesh. So then when Haryana will go into raid, they have to get 2 points. There is no other go. They have to get 2 points for a victory. If not, once again, it's going to be tied, or if the raider has been pinned down, that's going to be a very, very bad state for Haryana in this game. So it all depends on this review. If this review goes unsuccessful, even with cutting the bonus line, Himachal Pradesh has got that one important point. 27 now for Himachal Pradesh. Now, as I said, Haryana should go and take 2 points for sure. This is going to be the raid of her life here for Haryana, as who is getting inside. Probably there's a green card because they've been arguing a lot with the referee. I think now Mahesh, अंतिम कुमारी अंतिम रेड के लिए बिल्कुल, और उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी रेड के लिए शी इज गॉन इन नाउ। बिल्कुल 2 अंक लेना बहुत जरूरी कि जिस तरह से रिव्यू लिया गया था, 1 अंक बहाल किया गया था हिमाचल प्रदेश को यहाँ पर आक्रमण करती हुई दाहिने छोर पर राइट कॉर्नर में, और 2 अंकों का जैसे नवीन जिक्र किया वहां पर लेने की कोशिश की गई, लेकिन पूरी तरह से गिरफ्त में लेते हुए यह अंक अर्जित किया हिमाचल प्रदेश के टीम ने। और क्या कांटे की टक्कर यहाँ पर हो रही है, कितना संघर्षपूर्ण मुकाबला यहाँ पर खेला जा रहा है, देखते ही बन रहा है। और 1 अंक का यहाँ पर इजाफा हुआ, देखिए किस तरह से वहां पर भावना came from the left corner. बिल्कुल, she blocked her, but the jersey pulling also was there. That is the discussion that is happening. That is the discussion that is happening. If there was a jersey pulling, this raider will be safe, and it will be Haryana taking away 1 point. That is really important. It will be Haryana 27 if they go on the jersey pull. It was a very good tackle by Bhavna, but I'll tell you something, you cannot pull the jersey, and we've seen this decision come many single times. Right. Is it Himachal Pradesh? Yes, they have got it. Himachal Pradesh have got this point. The jersey pulling was not been considered because the defender from the left corner came across, got the angle right, and then when the raider was down, the jersey had been pulled. So the jersey pulling did not involve in tackling the raider. Very important tackle now which is going to come up. बिल्कुल, और ये देखना है कि यहाँ पर अब केवल जो 1 अंक का फासला है यहाँ पर किस तरह से अब होगा। लेकिन जर्सी पुलिंग की जो बात आपने कही थी, वो पहले मैं समझता हूँ कि एंकल पुलिंग बहुत अच्छी तरह से हुआ था, वहाँ पर ब्लॉक किया था वहाँ पर, और ब्लॉक करने के बाद जिस तरह से वहाँ पर उन्हें पकड़ा गया, लास्ट मोमेंट में जर्सी में हाथ जरूर लगा, लेकिन वो अंपायर ने जो रिव्यू है वहाँ पर नकारा। और the reason why it went to Himachal Pradesh is because the jersey was not involved in pulling the raider down. Okay, because the block was successful. Now lot of cards coming in, another card and another point being given away to Haryana because lot of talking and lot of confusion that has been created there by the Himachal Pradesh girls. I understand everybody has to win, everybody wants to win rather, and now this is not what they really want to see, isn't it? Himachal Pradesh just losing out another defender. Jyoti has to go back along with Pushpa. Oh my God, this is once again 27-27 on the mat. So both of them have got a single point. Their last raid of this game coming across from Himachal Pradesh to Haryana's den. This is the raid that will change everything. Nidhi Sharma, will she go for the bonus? She does. She does get the bonus, but it depends on the referee. Will they give the bonus point is a big question. Now you will have to also keep an eye on Prachi on that left corner. She was there. Has the bonus been given? She runs the clock down. Time is over. Bonus point! That is Himachal Pradesh winning it in a whisker of a time. Probably they'll be deciding on it as well. What a raid by Nidhi Sharma. I think the time is over. That's it. Himachal Pradesh, Mahesh, is our second finalist who will be playing Maharashtra tomorrow in the finals of the 36th National Games of Women Kabaddi Edition. What a match! Fabulous match! You just cannot compare this to any bigger match. This has been the cream of it. बिल्कुल, ब्लड प्रेशर को नापने की अगर कोई मशीन यहाँ पर नवीन लगा दे तो मैं समझता हूँ कि इस समय आपका ब्लड प्रेशर 140-50 के ऊपर होगा। नहीं, जिस तरह से बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आपने उत्तेजना पैदा की, जिस तरह से आपने इसका वर्णन किया और जिस तरह से खेल हुआ, मुख्य रूप से दो खिलाड़ियों, दो टीमों के बीच में जो संघर्ष हुआ, कांटे की टक्कर जिसे कहते हैं, वो देखने को मिला यहाँ पर। और बहुत ही मजबूत जो एक इरादा लेकर टीम उतरती है, और चालाकी आखिरी सर्व में, अपने आखिरी रेड में आपने देखी होगी
कि खिलाड़ी ने इंतजार किया, रेडर ने, पूजा ने इंतजार किया कि वो क्लॉक जो है वो टिकिंग करते हुए आखिरी क्षण में पहुंचे और उसके बाद वो वापस लौटी, कोई मौका नहीं मिला। Nidhi Sharma has put a raid of her life. And she's played Kabaddi at its best. Between 2 years, we say, she's played Kabaddi from her brain. She did not go for a hand touch, she did not go for a running hand touch, toe touch, nothing. She just went in, stole away the bonus from under the nose of Prachi. And the reason why this tape has been removed now is because after this we have the men's game that is going to happen. So that is why these tapes have been removed, and we will go back to 13/9, our normal length and breadth of the court. But I should say one thing here, Mahesh and Kulwinder, in our commentary box. If you ask me who the winner is, it's Kabaddi the winner. Not Himachal Pradesh or Haryana. On the score line, it can be Himachal Pradesh. बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि शुरू से हमने कहा था कि कौन सी टीम जीतेगी कहे जाना असंभव है, और जिस तरह से हरियाणा की टीम ने वापसी की थी 4-5 अंकों से पिछड़ने के बावजूद फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में जिस तरह से उन्होंने वापसी की, जिस तरह से उन्होंने डिफेंस किया, जिस तरह से एग्रेशन के साथ उन्होंने अटैक किया और जिस तरह से सर्विस लेके हुए रेड करते हुए उन्होंने अच्छे ग्रिप्स किए, वो टैकल किया, मैं समझता हूँ कि उसी की वजह से ये मुकाबला आखिरी जो आधा सेकंड था, आधा मिनट का जो खेल था उसमें 27-27 अंकों के साथ बराबर पे था, लेकिन आखिरकार वहां पर कहते हैं ना तकदीर और चतुराई चालाकी, उसने जीत हासिल की और यहाँ पर हिमाचल की प्रदेश टीम जीत हासिल। I know one good word in Hindi, probably something called Jahan, the Soch. Yeah, that is what went in favor of the Himachal Pradesh girls. They played well, they really played well. But do not forget, Haryana also put their heart out on the mat. They made sure they gave a very, very big fight against strong players like Pushpa, Jyoti, Bhavna, Kavita of Himachal Pradesh, and that is a score line for us. It is going to be 1-point victory for Himachal Pradesh to go and face Maharashtra. Very, very strong team. Come on, we saw what they did to Tamil Nadu today in the first semi-finals, and they will be playing against Maharashtra tomorrow in the finals. I think two well-deserved teams in the finals for this 36th National Games in the Kabaddi edition for women. 28 के मुकाबले 27 अंकों से यहाँ पर हिमाचल के टीम ने जीत अर्जित कर लिया है। So we'll come back soon when we have the men's semi-finals that's going to come up. I am Navin Shori along with Mahesh Tiwari and Kulwinder. We'll see you very soon when the men's semi-finals is about to begin.
welcome to the first semi-finals of the men's edition here, and it is going to be superstars on the mat. The reason I say this is because it is top stars Rahul Chaudhary and Surjit Narwal taking upon against each other, and we have the Uttar Pradesh team in the orange, and it will be captained by the star, the poster boy of Kabaddi in India. It is going to be Rahul Chaudhary there, Uttar Pradesh, and we also have Sahul Kumar and also Harinder Kumar, Ashush Singh, and definitely it's going to be Nitin Tomar coming in. And the toss is been won by the services, and they have selected to ask the Uttar Pradesh team to come in and raid. Surjit Narwal, the captain of services, has made sure that the first raid will come in from, I think, Rahul Chaudhary. This is what it is. 36 national games. I am Navin Chaudhary along with Kulwinder in the commentary box. And we are all ready for this first semi-finals. Uttar Pradesh captained by the star himself, Rahul Chaudhary. And where we have on the other hand another star. It is Surjit Narwal. थैंक यू नवीन शौरी। बहुत जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि महिलाओं के जो दो सेमीफाइनल आज यहाँ पर खेले गए, जबरदस्त कबड्डी देखने को मिली। आज कोई टीम नहीं जीती, आज कबड्डी का खेल जीता है और ये परंपरागत खेल है। और इस समय दोनों ही टीमें जो पुरुषों के पहले सेमीफाइनल में सर्विसेज की टीम है, और ये देखिए लाइनअप सावन। अभी मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो दोनों टीमों का इंट्रोडक्शन के लिए पधारें। Arjun Deshwal, Naveen Kumar, another raider, Neeraj on that left cover, and Sombir on that right corner, and Sandeep Khandola on that left corner as well. So very, very strong teams that are up against a very strong Uttar Pradesh team. What I feel is, Kulwinder, with Surjit Narwal, Sandeep Khandola, everybody from the services team, and Sombir especially, it is going to be raider versus defender ka contest, because I'll tell you why. Because Surjit Narwal as a skipper is a very, very good right cover. Sandeep Khandola on that left corner is very strong on the ankle holds. And we have the dignitaries who have been presented on the court for this all-important semi-finals number 1, which is going to happen between UP and the services. There we have the services players just making sure they play all in the good spirit of Kabaddi. And we have all the dignitaries wishing the superstars very, very good luck. And much needed these sort of wishes and blessings, because you will play a hard game out. And after being representing Kabaddi in so many occasions, in so many arenas, this is going to be the way that you will play for the state. And also I'm happy here, Kulwinder, even with these superstars still playing for their state. That is the josh that they have to play towards the state, and that's really well done by them. और 10 साल पहले तक कबड्डी का शायद इतना नाम नहीं था, लेकिन अब कबड्डी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी खिलाड़ी, अगर हम बात करें राहुल चौधरी, सुरजीत नरवाल, संदीप कंडोला, एक ऐसे नाम है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाने जाते हैं। और इस समय ये उत्तर प्रदेश की टीम है आपके स्क्रीन पर, जो आज के मुख्य अतिथि और आज के जो विशेष अतिथि हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, उनसे परिचय प्राप्त करते हुए, और उनके साथ ही डॉक्टर सुनील डबास जो कि पद्मश्री हैं और भारत की तरफ से उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं, वो भी यहाँ पर इन खिलाड़ियों के साथ बातचीत करती हुई। And it's going to be Rahul Chaudhary versus Surjit Narwal. Why not? Because technical officials, please start the match. Orange will be represented by Rahul Chaudhary and Sahul Kumar, also Ashush Singh, everybody playing across, and Nitin Tomar. Two strong raiders against two strong defenders, Surjit Narwal and Sandeep Khandola. And do not forget Sombir in that right cover. It's a fabulous sort of a setup that's going to happen here for the first semi-finals. And if both the teams are clashing up against each other in the semi-finals, that shows that they have played really well in the league stages as well. महिलाओं के मुकाबले में इतनी जबरदस्त मैच देखने को मिला, और उसके बाद पुरुषों का मुकाबला में मैं तो समझता हूं कि और ज्यादा गर्माहट और जोश दिखाई देगा इस एका स्टेडियम पे। और यहां पर 36वें राष्ट्रीय खेलों का कबड्डी के मुकाबले पुरुषों का पहला सेमीफाइनल
सर्विसेज और उत्तर प्रदेश के बीच में अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। और अगर हम बात करें आज के दूसरे सेमीफाइनल की, जो कि इसके बाद होगा, उसमें हरियाणा और सुदृढ़ टीम महाराष्ट्र की टीम आमने सामने होंगी। First raid will happen from Rahul Chaudhary. That is the name that you want to hear. Every single Kabaddi player is being inspired by this man on the screen. Comes in to the left and right of our screens. Right raider who can also raid from both sides of the court. Goes in, tries to see who can he target. Very, very strong left corner, Sandeep Kondola. Rahul Chaudhary, the man, is going and attacking the right flank as well. Left corner, just be very careful on that, because the strong angle holds of Sandeep Kondola can be sometimes very, very lethal. As a very, very exciting game. There we go. Number 10 goes across. That means it is Naveen Kumar. I am Naveen Shauri here, but with Kulwinder, and on the court we're watching Naveen Kumar raid, and he goes in, runs in, kicks across the right flank, and then goes back probably empty-handed, as there are going to be another 10 seconds left. और नवीन कुमार मैदान पर भी हैं, नवीन कुमार कमेंट्री बॉक्स में भी हैं, और बहुत जोश यहाँ पर कमेंट्री में भी और खेल में भी। और अब इस समय गए हैं उत्तर प्रदेश की तरफ से अटैक करने के लिए। देखना यह है कि क्या आशु सिंह को यहाँ सफलता मिल पाती है। और नंबर 10 की जर्सी में इस समय गए हैं साहुल कुमार, जो कि खिलाड़ी हैं। In the raiding, Nitin Tomar going in and making sure gets his hand across. As I said, very, very strong raiding unit, this UP team, and they have to understand that it is not what Nitin Tomar will be wanting there. It's an empty raid that they have been come back, watching it very closely. And also, somewhere Arjun Deswal comes across. You have to be mindful of that. Left corner coming across to you. There we go. Is he got that touch point? They look like they've got it. Very, very confident. Harinder Kumar. They've not got the bonus. Ritesh Shirwadkar is the referee there. He said, no, there's no bonus. Now Nitin Tomar in a do-or-die raid. Tries for the toe touch. He has to get something out of this. Goes across, comes in, and then attacks probably the left flank. Comes across, then somewhere. Now action about to unfold on that right corner. Under his nose. Has he stolen the bonus? But you have to be very careful. That bonus is not what you want in a do-or-die raid. Raider gone out. Nitin Tomar wants to see he's got the bonus or no. But no. Nitin Tomar, and we have Kabaddi Babu also. Mr. Prasad there, we fondly call him as Kabaddi Babu. Nitin Tomar sought that, did he get the bonus? But no. Nitin Tomar did not get the bonus there. Another raid, and Naveen Kumar once again, he has to get them started because it's a do-or-die raid for them. The defense did well. Now in the raiding, can services get up a point? Oh, he's confident of a bonus. He's confident of it. And Ritesh Shirwadkar says no, there is no bonus point. Naveen Kumar with so much experience, can they go for a review? Can Nitin Tomar go for a review? No, he does not want to in the initial stages of the game. Because it was a do-or-die raid, you cannot be so sure if you have not got the bonus, and that's why Kulwinder has been sent out. Now Rahul Chaudhary. राहुल चौधरी अटैक करते हुए, और राइट कॉर्नर पे उन्होंने थापी लगाई कि टच किया है, क्या अंक मिलेगा, और उसके साथ ये अंक हासिल किया, बोनस अंक। और इसके साथ ही ये 2-1 से उत्तर प्रदेश आगे। लगभग 4 मिनट का समय समाप्ति की ओर है, लेकिन अंक अभी बहुत कम बने हैं। और सर्विसेज की तरफ से अब गए हैं 3 नंबर की जर्सी में मंजीत। Strong block coming across from right corner. Look at that for a dash. That is what you need to see. So importantly. Manjeet just went in too deep towards that left corner. There you go. He went in too deep and then right cover. That is what you want to see so strongly as a dash comes across from Harinder Kumar. और अब राहुल चौधरी, क्या यहाँ पर राहुल चौधरी अंक हासिल कर पाएंगे? लेकिन उनको कैच कर लिया गया और 1 अंक हासिल किया सर्विसेज की टीम ने। सर्विसेज की टीम इस समय, ये देखिए किस तरीके से उन्होंने टच जरूर किया था, लेकिन सामने से होल्ड किया और पूरी तरह से ब्लॉक कर लिया गया कप्तान राहुल चौधरी को। And he got whom? Surjit Narwal. It is the defense versus Raiders.
Kulvinder, I told you this match is going to be the raiders of Uttar Pradesh and defenders of the services. And that is what has panned out to be. Rahul Chaudhary going out with a strong dash from Surjit Narwal. Then has to be very careful though, Navneen. He cannot step into the lobby when there are more... there's no connection between the defenders. Now Nitin Toma. He has to get some raid points. He's not got one still. साहुल कुमार और अब जो रेड करने के लिए गए, क्या ये अंक हासिल कर पाएंगे देखने वाली बात है। बोनस भी ऑन है, क्या बोनस लेने की कोशिश करेंगे। राइट कॉर्नर में थे, लेफ्ट कॉर्नर पे गए और देखना ये है। Nitin Toma in that 10 number jersey, he will go back empty handed. Nitin Toma, so important to get in those raid points, and Rahul Chaudhary not on the mat. He has to make sure that he revives him very clearly. Number 10 jersey there. Now goes for the stretched hand touch. Does not get it yet. Arjun Deshwal has to be very careful about that right corner coming across. Can he get it? Can he get that? Is a very important question. Goes back empty-handed. Very good thinking, I'll say, because Nitin Toma now has to do something here, Kulvinder, to revive Rahul Chaudhary. Can he do this? नितिन गए समय अटैक करने के लिए और राइट कॉर्नर पर उन्होंने पुश किया थोड़ा सा पीछे, लेकिन क्या समय का देख रहे हैं कि समय पूरा हो या एक बार फिर से वो अटैक करेंगे, क्योंकि अटैक डिफेंस बहुत मजबूत है। सर्विसेज की टीम है, उनका काम ही डिफेंस करना, देश की रक्षा करना और अपने पाले की भी रक्षा करते हुए। और इस समय अब सर्विसेज की तरफ से गए नवीन कुमार, जी डू और डाई रेड, और क्या यहाँ पर वो अंक हासिल करते हैं नहीं देखने वाली बात है। और ये लेफ्ट कॉर्नर पे उन्होंने टच करने की कोशिश की, बहुत ही चौकन्ने हैं और चेन जिस तरीके से दो के खिलाड़ियों की है पूरी तरह से रोका हुआ, उनको क्या यहाँ टच कर पाएंगे। और इसके साथ ये हासिल किया, अंक हासिल किया। डू एंड डाई रेड थी, बहुत जरूरी था। In a do or die raid, that is what you need to do, where the right corner, Rajendra Singh, actually not playing in that right position. Look at that, playing a very, very high line defense, goes in and then pushes him across in the chain, not allowing it well there. Mohit Balyan, he should have come across nicely. Now this is Mohit Balyan in the number 7 jersey. Is trying to see if he can probably get something out of this. It's a do or die raid, and an error comes in from right corner, Sandeep Kandola. After a very, very strong defensive skills that's been exhibited, it's Sombir correction from right corner. There we go. Sombir going in for the double ankle holds. The idea was right, but then Mohit Balyan even better in his backtracking skills and kept his legs away from that strong diving ankle hold that used to come in. And now Arjun Deshwal, he has to understand that it's going to be that right flank, which is not there. He's got the touch point and also utilizes the lobby and runs away across the midline. Not a good backtracking skills that has been shown there. And that is what not you want from Harendra Kumar, the left cover. Look at that, playing the right corner this time, and then he was found in no man's land. और इस समय उत्तर प्रदेश की टीम अटैक करती हुई राइट कॉर्नर पे और लेफ्ट लेग से उन्होंने टच करने की कोशिश की, क्या सफलता मिली है नहीं। एक अंक हासिल किया, बोनस अंक हासिल किया। इस समय उत्तर प्रदेश की टीम ने बहुत नजदीकी मुकाबला, उत्तर प्रदेश 4 और 5 पर है सर्विसेज की टीम। Very good running bonus, I'll tell there, Kulvinder, because this is a timeout that is really important that's been taken by the services. Just a slender lead, and the coach Narendra Kumar and Mridul Shah, the manager of services, will be talking to the players, saying that do something out and put it across Rahul Chaudhary. And Rahul Chaudhary being kept out of the court is a very, very good situation for the services team, because we know what he can do. He can just come in and demolish the defense in no time. So when Rahul Chaudhary is outside the court, you need to make more points, is what Narendra Kumar would have been told. And then S. Rajguru, the coach of the Uttar Pradesh team, would have said, try and revive Rahul Chaudhary. Try and do something and make sure that Rahul Chaudhary is revived. और मेन अगर खिलाड़ी है वो अगर बाहर जाकर बैठता है तो आउट होकर बाहर निकलता है, तो उसको रिवाइव करने की पूरी कोशिश रहती है, अटैक करने के लिए जाते हैं। इस समय सर्विसेज की तरफ से नवीन कुमार अटैक करने के लिए लेफ्ट कॉर्नर पर गए हैं। लेफ्ट कॉर्नर पर उन्होंने पुश करने की कोशिश की डिफेंडर को, लेकिन चेन के साथ डिफेंड करते हुए क्या यहाँ पर वो अंक हासिल कर पाएंगे, क्योंकि
और बोनस अंक भी ऑन नहीं है, लेकिन यहाँ पर अंक हासिल करना होगा और काफी अंदर तक गए थे राइट कॉर्नर में, लेकिन सफलता नहीं मिली। Yeah, bonus is on only when there are 6 or 7 men on the court as the defense, and then he had to get inside too deep, does not get it right, and now this is something to do for Mohit Balyan. He has to understand that Nitin Tomar has got just a bonus point today in that 4 points. It's the defense that has been doing well, and Rahul Chaudhary has not got a single rate point for himself. It's been that sort of a slow scoring game. It's been very tight from both the sides, and also trying to get into their own now in the defense itself, the Uttar Pradesh. Now for services, and this is a very important raid for Manjeet as he comes in, and I've been joined by Mahesh in the commentary box. Mahesh, very strong two teams that are in front of us. The men in orange are the Uttar Pradesh, and the men in blue are the services. And as I said, it's going to be a contest between the Uttar Pradesh's Raiders and the defense of services. There we go. Stepping into the lobby, he slipped across and he had to go inside the lobby. Manjeet, that's not a very good raid. Without a touch on the defender, you cannot go inside the lobby. Oh, he slipped there and then stepped into the lobby. That is the error that Manjeet occurred for him, and he had to go out of the court. बिल्कुल, और इस तरह की गलतियों की वजह से खामियाजा भुगता है वहाँ पर इस समय राहुल चौधरी और Rahul Chaudhary was revived with that error from Manjeet, but then look at the dash that came in so strongly. It was Rahul Chaudhary going for the bonus, but then again Surjit Narwal gets his man. Captain versus captain is a very good contest. The defense of services, raiding of Uttar Pradesh. बिल्कुल, बहुत ही आसानी के साथ में गिरफ्त में आते हुए नजर आए कप्तान वहां पर नरवाल के सामने, और यहां पर देखना है कि सर्विसेज क्या एक अंक और यहां पर अर्जित कर पाता है, जबकि काफी तेजी के साथ वहां पर नवीन कुमार अंक लेते हुए नजर आए। और ये भी संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कांटे का होने जा रहा है नवीन, इसमें कोई दो राय नहीं, और दर्शकों की तादाद निश्चित रूप से बढ़ती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर सर्व करते हुए अब यूपी के खिलाड़ी अभिषेक सिंह। Yeah, the running hand touch was really well done, executed on that right corner, and utilizing the lobby. Went an ankle hold. Sandeep Kandola announces himself on that left corner. You just cannot escape of that strong grasp that he's got. The moment when we saw him first in those franchisee leagues, we were saying Sandeep Kandola is the strong left corner to watch out for, and services have got that. Now, Uttar Pradesh with a super tackle. Can they do it? Only two defenders on court. This is going to be tough. If they do not get it, it's going to be a super raid that's going to coming in. It's a fabulous bit of a raid. He kept his nerves, Naveen Kumar, and also got his hand across. Only one man left on court now for Uttar Pradesh, and it's going to be Nitin Tomar. Can he save the team, Mahesh? बिल्कुल, देखना ये ना कि अभी यहाँ पर ये कुछ किसी तरह से वापसी करा पाते हैं अपने टीम के लिए। तोमर, साहुल कुमार, जर्सी नंबर It is Nitin Tomar. Correction on that team list. It is Nitin Tomar who will be probably going in. 10 seconds to go. एक अंक अर्जित करते हुए, एक पॉइंट लेते हुए यहाँ पर वापस लौटे। He's got 2 points, bonus +1. Running bonus, and on top of Sandeep Kandola. Look at that, goes in, gets his hands across and pushes Sandeep Kandola away with that diving hand touch. All important raid for Nitin Tomar. Now Naveen once again comes in. He's got two defenders. He's been tackled as if a runner reaches the winning post. 100 मीटर की जो दौड़ होती है, मानो उस तरह की दौड़ लगाते हुए नितिन तोमर ने 4 अंक अर्जित किए, और ऑल आउट होकर जो उत्तर प्रदेश की टीम हुई है 2 अंक लोना के मिलते हुए, तो कुल मिलाकर 13 के मुकाबले 7 अंकों की बढ़त सर्विसेज के पक्ष में है। और लोना जब हो जाता है तो 2 अंकों का इजाफा वैसे भी नवीन पक्ष में आता है टीम के, और 13-7 एक अच्छी बढ़त कही जा सकती है पहले हाफ में, जबकि अभी आधा समय खेल का हुआ है और एक लोना यहाँ पर लेती हुई नजर आई है सर्विसेज की टीम। Yeah, Lona is the Kabaddi term for all out, and Rahul Chaudhary strikes, and he's staring on the mat. Get inside the lobby as well. Rahul Chaudhary gets inside the lobby. He's been accepted by Hritesh Shirwadkar. He says no way Rahul Chaudhary can be wrong on those occasions. Turn, and he's got Surjit Narwal. The man who was dashing him away for all this time on the court is sent him back on the bench. That's a revenge for Rahul Chaudhary. I like that confidence, what he did. He went in, had that toe touch, then went inside the lobby. He says, okay, I am confident of that toe touch, don't worry.
मंजीत वहां पर कबड्डी कबड्डी का चांद करते हुए 30 सेकंड का वक्त होता है कबड्डी कबड्डी कहने का, और उसके बाद यहाँ पर वापस लौटते हुए बिना किसी अंक के एसएसबी 13 और 8 उत्तर प्रदेश. Don't write off the Uttar Pradesh yet, Mahesh, because it's Rahul Chaudhary there. He can raid from both sides. Wrong tackle. Not what you want to see from a defender who is very, very good. Strong advanced tackle, and it was Manjeet. Your job is to go in and raid there, Manjeet. Not attacking the star raider from the opposition end. Outside the back line, no doubt that you're going to tackle any other raider. Forget Rahul Chaudhary. बिल्कुल राहुल चौधरी को इस तरह से अटैक करना वो खतरे से खाली नहीं था, और अंक अर्जित करते हुए वहां पर और यहाँ पर काफी तेजघात प्रयत्न किए, लेकिन यहाँ पर घूमते हुए उसे उठा लिया, किसी भी तरह से टच करने की कोशिश. जो कॉर्नर थे, कॉर्नर ने अपनी भूमिका निभाई, और कुल मिलाकर 10 के मुकाबले 13, एक एक अंक कांटे की टक्कर यहाँ पर नजर आती हुई नजर आ रही है. जिस तरह से कॉर्नर ने घूमा और वहां पर उसे बैकअप किया. It's a strong backhold by the left corner because he did not turn across. He was a strong backhold. Rahul Chaudhary wanted to lift the defender and go through towards the midline. Does not get it and has to perish in that attempt. Very strong dash coming across. Look at that once again. It was number 8, and that is the strong defender coming from Sandeep Kandola, left corner. Just cannot lift over and go through. They'll be discussing something. Whether both the defenders went outside the lobby is a question now. Surjit wants to have a timeout. Oh, right. Sandeep Kandola also been sent out. It's going to be each 1 point, I guess. Yes, it is each 1 point. That is what Prasad, Kabaddi Prasad, or Prasad Rao sir, we call him the man of Kabaddi. He's been the main adjudicator for this game. He's been giving that decision. Rahul Chaudhary and Sandeep Kandola, both of them stepping outside the lobby, and that's why each 1 point now. और दोनों ही खिलाड़ी जो लॉबी के बाहर चले गए थे, तो यहाँ पर फिर राइट कॉर्नर से टैकल करने की कोशिश की, ढकेलने की कोशिश की और पुश करने की कोशिश की. उसके मुकाबले फिर यहाँ 1 अंक का इजाफा होता हुआ. किस तरह से वहाँ पर घूमकर ढकेलने की किसी पुश किया उसे बाहर की तरफ, तो 1 अंक का इजाफा होता हुआ यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तरफ 12 के मुकाबले 14. Harinder Kumar was playing in that high line defense on that left cover, pushed it across and went through that right corner. Now super tackle situation. Oh, they've put Rahul Chaudhary outside. He tried his best, but then 2 more points for the services. Rahul Chaudhary can understand that this is a very, very strong defensive unit. He has to understand that and probably play a little more lesser in his attacks. Look at that, he went in very deep, wanted to attack Surjit Narwal, and then Manjeet came in strongly, pushed him outside the lobby, and then said, okay, we'll get 2 points for that. बहुत चतुराई के साथ, चालाकी के साथ लिया गया वो अंक. जब देखा कि ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ पर घूमकर जिस तरह से बैकअप किया राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर ने, दोनों तरफ से दबाते हुए वहाँ पर, और यहाँ पर 1 अंक और अर्जित करते हुए उत्तर प्रदेश की टीम 13 के मुकाबले 16. Right corner came across in the chain. Look at that. The chain tackle was what was very effective. He wanted to go under the chain, proper dupki putting in, but the chain was so strong, and then the support staff came in. The green card just given for rough handling, rough tackle. So he just given a verbal warning there for the defenders. Now Nitin Toma, now in a super tackle situation. They can push this services for the all-out, but other raiders of Uttar Pradesh getting a little greedy and trying to make sure score points in heap. I will say go back in this raid because there is no Rahul Chaudhary there, Mahesh. Nitin Tomar should not take a big chance. He has to go back. Very good, I'll say, because you can only play on that do-or-die raid, and you've already given away a super tackle point. And the reason why there's a lot of noise in the arena is because it's Surjit Narwal coming into raid for the first time. Just an official legal raid, he'll go back without disturbing the defense. He just wants to play on the super tackle more. बिल्कुल. और सुरजीत नरवाल देखना है कि यहाँ पर जिस तरह से एक गर्जना सी हुई थी, यहाँ पर शोर उमटा था उसको जैसे वो रेड करने आए, और आसानी के साथ वहाँ पर उन्होंने टैकल किया. 1 अंक अर्जित के बोनस लाइन का, और एक नहीं बोनस है क्योंकि क्लैडी वहाँ पर 5. He tried for the bonus, he didn't get it. He tried for the bonus. Now super tackle. He has to do something here, Mahesh, because if not, the next raid is going to be a do-or-die raid for Uttar Pradesh. He has to go for this. This is the raid that Nitin Toma has to take all the responsibility. If not, it's going to be tough. Toe touch being attempted on that single man without in the chain. Oh, he goes back. Next raid, it's going to be the monstrous of a raid for Uttar Pradesh. बिल्कुल बिल्कुल. देखना अब ये है कि इस रेड पर अब किस तरह से प्रदर्शन करती है, जहां पर कैप्टन सुरजीत नरवाल
जो कि काफ़ी इत्मीनान के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, समझ रहे हैं कि हड़बड़ाहट 3 अंकों की बढ़त उनके पास मौजूद है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है और वक्त धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये चतुराई होती है, चालाकी होती है और सूझबूझ का परिचय होता है जो यहाँ पर नरवाल दिखा रहा है। कप्तान बिल्कुल सूझबूझ के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। Fabulously you read the game. You read the game and read the mind of Surjit Narwal. Now do what I read. Rahul Chaudhary walks in. It should have been Nitin Tomar is what we felt. Rahul Chaudhary walks in a super tiger situation. Surjit Narwal cannot put his strong ankles in place and could not keep the thighs of Rahul Chaudhary down. Look at that, it was a very strong tackle attempted, but then Rahul Chaudhary pushed Surjit Narwal from his hands. That's a very good skill that has been exhibited, and Rahul Chaudhary survives on a do-or-die. Look at that, the way he pushed him down on the shoulder, pushed Surjit Narwal down, got a point, and that is what you want to see from Rahul Chaudhary. और इसके पहले जो नवीन उन्होंने कोशिश की थी उसमें सफल नहीं हुए थे इसके पहले के रेड में जब वो आउट होकर बाहर निकले थे, लेकिन इस रेड में उन्होंने सफलता के साथ सूझबूझ के साथ अपना अंक अर्जित किया। उत्तर प्रदेश अब यहाँ पर डू और डाई की जो सिचुएशन है और देखना है कि क्या यहाँ पर अगर किसी भी तरह से अंक अर्जित करते हैं तो 3 अंकों का इजाफा हो सकता है सर्विसेज के लिए। No, he just wants to get 1 point. If not, it's going to be difficult. They are leaving the bonus away. They want to leave the bonus away is the Uttar Pradesh. They say it's okay. Let him go with the bonus back and we will go back and get the all-out done. Oh, that's kind of a confusing strategy there as Savin came in and he was just given away the bonus because Rahul Chaudhary now will try in a super tackle to attempt the all-out. Can he come in? Can he come across? The left corner is just like a sitting duck. He has to make sure Savin has been attacked, but Suraj somewhere should fall and try a double ankle hold on the defense. He does it. He's got it. He's got his man. That is what I was telling you. Because Rahul Chaudhary, you just can't keep him away. You have to go for the attack with so much time there left on yourself. It was Neeraj was just sitting there as I said, as a sitting duck. That's it. Now last man standing and they are in the brink of an all-out. और देखना है कि यहाँ पर अब यहाँ किसी भी तरह से कोशिश करनी होगी अंक अर्जित करने की। जहाँ तक सर्विसेज का सवाल है वहाँ पर सविन और इसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अकेला जब डिफेंडर होता है वहाँ पर नवीन तो उससे और लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से टीम ऑल आउट एक लोना और 2 अंकों का इजाफा और होगा उत्तर प्रदेश के लिए। तो निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ उत्तर प्रदेश ने अच्छी वापसी की है इस मुकाबले में। And that all out has also given them the scores to be very equal. Savin got the bonus once again, but then running into that left flank. Look at that. Left corner and Nitin Tomar. Chain tackle coming across from left corner and left in. Once again, Rahul Chaudhary has gone in very clearly and got his hands on a very strong right corner defense. He's got his running hand touch going equally well now, Rahul Chaudhary. The reason why Uttar Pradesh has come back, Mahesh, is because Rahul Chaudhary is firing. That is the name. You have to keep it away if services wants to do some damage to Uttar Pradesh. This is going to be the last raid of the first half. It is going to be Naveen who will try his best. Turns across on the running bonus. Does not get anything on the toe touch. Has to go back. What a game. First semi-finals. Can you pick a winner? 20 minutes have gone by. It's just 18 apiece. And we do not know who's having their nose in the front. बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा संघर्ष ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश और सर्विसेज के बीच में जो मुकाबला खेला जा रहा है इस 36वें राष्ट्रीय खेलों में या ये स्टेडियम में जहाँ पर इंडोर स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जा रहा है यहाँ पर 36वें राष्ट्रीय खेल में। और ये मेंस विभाग में पुरुष विभाग में पहला सेमीफाइनल का मुकाबला जहाँ पर उत्तर प्रदेश 19 के मुकाबले 18 अंक यहाँ पर स्कोर तालिका पे नजर आ रहा है। तो 1 अंक की बढ़त यहाँ पर पहले हाफ में उत्तर प्रदेश के टीम के पक्ष में मौजूद है, लेकिन ये बढ़त इतनी निर्णायक नहीं है कि जहाँ से कोई भी टीम राहत की सांस ले सकती है। यहाँ पर 5 मिनट का जो इंटरवल होता है उस वक्त अब दोनों ही टीमों के जो कोच है अपनी अपनी टीम को हिदायत देंगे। जहाँ तक सर्विसेज के कोच का सवाल है नरेंद्र कुमार और यूपी के जो कोच है वो एस राजागुरु अपने टीम को हिदायत जरूर दे रहे होंगे कि किस तरह की रणनीति अपनाकर उन्हें खेलना होगा। दर्शकों की तादाद यहाँ पर निरंतर बढ़ती जा रही है। ये स्टेडियम पूरी तरह से यहाँ पर भरा हुआ नजर आ रहा है और क्यों ना हो क्योंकि ये मुकाबला सेमीफाइनल का बिल्कुल चरम सीमा पर उसकी उत्तेजना है बिल्कुल तेजी के साथ यहाँ पर आकी जा सकती है। ट्रांस स्टेडिया ये इंडोर स्टेडियम जहाँ पर ये मुकाबला खेला जा रहा है। The reason, as I said, as we set up this match, a strong defensive unit of the services
Very strong raiding unit of the Uttar Pradesh. That is what this first half is all about. There we go once again. Surjit Narwal and Sandeep Kandola along with Sombir. It's a very, very strong defensive wall. But then Mohit Balyan and Rahul Chaudhary and Nitin Tomar, everybody in the raiding department have done really well. And when you let Rahul Chaudhary go, he's not happy. Look at that. Because Surjit Narwal kept on getting him every single time in the dashes. Once he was dashed out from that left lobby, and then once when Sandeep Kandola pushed him away from the right lobby, he was really disappointed with his performance. But then when he came back very strongly, this was a raid of the match for me. Naveen had put a raid of the match. You cannot have a big gap when two defenders are on one end. You just cannot leave a gap, and this is Rahul Chaudhary coming back strong. Look at this. This was Sandeep Kandola's dash, as Sandeep Kandola and Rahul Chaudhary, both of them went back, and Rahul Chaudhary made sure that Uttar Pradesh actually gets something out of it. So there are two all-outs that happened, one for the services, one for the Uttar Pradesh. So that is why the score line is so even Stevens. 19 for Uttar Pradesh. Just that one solo single point is going away, going ahead, and services will feel the next 20 minutes they want to make it theirs, because the winner will play the finals tomorrow. ये जो टक्कर हो रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश और सर्विसेज के बीच में, ये ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की टीम थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जिस तरह से वापसी की वहाँ पर राहुल के जरिए पूरे टीम ने, जिस तरह से उन्होंने पूरे मैच को अपने गिरफ्त में लिया राहुल चौधरी ने, उसके बाद अंतिम समय में एक अंक अर्जित करते हुए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की टीम ने 19 के मुकाबले 18 यानी एक अंक की बढ़त हासिल की है। तो ये मुकाबला भी बहुत कड़ा और संघर्षपूर्ण होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से मुकाबले यहाँ पर खेले गए, पहला सेमीफाइनल का मुकाबला महिला विभाग में जो खेला गया था महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, वहाँ पर महाराष्ट्र की टीम ने जीत अर्जित की थी, और दूसरा महिला का मुकाबला जो खेला गया हरियाणा और हिमाचल के प्रदेश की टीम ने, तो वहाँ पर हरियाणा की टीम ने एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में 28 के मुकाबले 27 यानी एक अंक से जीत अर्जित की। और पुरुष विभाग में ये मुकाबला सर्विसेज व यूपी के बीच में जो खेला जा रहा है, पहले हाफ में यहाँ पर एक अंक की बढ़त हासिल है उत्तर प्रदेश की टीम के पास। निश्चित रूप से जिस तरह से दो मुकाबले पिछले हुए हैं, चाहे वो महिला के हो चाहे पुरुष के, बहुत कड़े संघर्ष देखने को मिले। आज यहाँ पर ट्रांस स्टेडिया इस इंडोर मैदान पर ये जो मुकाबला यहाँ खेला जा रहा है, ये भी एक संघर्षपूर्ण मुकाबला होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। Uttar Pradesh, the reason they've got that 19 is because, remember when Savin went to that raid, he got the bonus point, and then there was the all-out. So that bonus has been added on, and it is 19. That is the only point. So we are all set. Another 20 seconds to go. What a big 20 minutes to go for us to get our first finalist in this men's edition, the first semi-finals here in the 36th national game. This is happening at France Stadia, Ahmedabad, Gujarat. I'm Naveen Shauri, and along with me now in the commentary box is Kulwinder. Kulwinder, this game, I do not know who is having their nose in the front. It's such a tough game. देखिए, ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला है पुरुषों के मुकाबले में। 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि कबड्डी मुकाबले एक स्टेडियम में चल रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला। पहले हमने महिलाओं की कबड्डी देखी, उसमें नज़दीकी मुकाबला रहा दूसरे वाला, चाहे वो हिमाचल और हरियाणा के बीच में था, और यहाँ पर ये 19-18 से उत्तर प्रदेश की टीम आगे चल रही है। अब देखना है कि सेकंड हाफ में किस तरह से यहाँ अंक हासिल किए जाते हैं। लेकिन एक बात मैं नवीन ज़रूर कह सकता हूँ, ये मुकाबला बहुत ही नज़दीकी मुकाबला रहेगा, और दोनों तरफ ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। अगर बात करें सर्विसेज की तो सुरजीत नरवाल जो कि कप्तानी कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। इसके अलावा राहुल चौधरी और नितिन कुमार जो उत्तर प्रदेश की टीम में हैं, वो काफी नामवर खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश के। तो दूसरा हाफ शुरू होता हुआ और अब सेकंड हाफ शुरू होने वाला है, और अटैक के लिए सर्विसेज की तरफ से इस समय गए हैं अर्जुन देसवाल। क्या वो पहला अंक हासिल कर पाएंगे अपनी टीम के लिए? और इस समय लेफ्ट कॉर्नर पर जाते हुए, लेकिन चेन के साथ दोनों तरफ से उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। क्या अर्जुन यहां पर अंक हासिल कर पाएंगे? और बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में अंदर धकेलने की कोशिश,
बोनस अंक भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन चेन डिफेंस के साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की टीम ने यहाँ पर उन्हें रोका है, काबिल तारीफ है। और सिटिंग ब्लॉक्स में बैठे साथी खिलाड़ी तालियां बजाकर अभिनंदन करते हुए। और अब बिल्कुल उत्तर प्रदेश की तरफ से गए हैं उनके कप्तान सुरजीत नरवाल। क्या यह नरवाल अंक हासिल कर पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की टीम केवल 1 अंक से आगे चल रही है। और यहाँ पर टच किया, क्या ये होल्ड कर पाएंगे, और उसके साथ ही लॉबी में ले जाकर पटका और अंक हासिल किया। Strong ankle hold once again from the right corner. Sombir, look at that. Ankle hold. Rahul Chaudhary could not escape that grasp. And he wanted to do well, but Surjit Narwal comes across from that left cover position and puts Rahul Chaudhary down on the mat into the lobby. Now Naveen, that raid where he inflicted the all-out was a raid of the match for the services. He's got that running hand touch. He's claiming. Ritesh Irwadkar and Prasad Rao says yes. Naveen has got that running hand touch on that right corner. Very, very strong right corner there. Rajendra Singh, he wants a review. He wants to review it. Let's see what happened. Naveen went in. He goes for the covers and then stretches his hands across for a touch point. And Nitin Tomar actually says that they have the review. Let's listen in. Yeah, that is what the review is there from Uttar Pradesh. There we go. Naveen goes in strong. Stretches his hands out. It's a diving hand touch. Somewhere the right corner would have not realized that on his kneecap there he wouldn't have realized the touch. Probably that's the reason they're going in for the review. See, he's confident saying no, there was no touch. But sometimes, Kulwinder, what happens is the players do not feel the jersey touch or the kneecaps that's been touched. Everything is counted. Even if it's the jersey is touched by the raider, it is for the raider as a touch point. बिल्कुल अंक मिल सकते हैं अगर टच करते हैं। रिव्यू में देखा जा रहा है और यहाँ पर रिव्यू में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन टीम रिव्यू लिया गया है और 19-19 से दोनों ही टीमें बराबरी पर हैं। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला उत्तर प्रदेश और सर्विसेज के बीच में। Now the referees also watching it very, very clearly and making sure, because it is Naveen Kumar. It's a strong raider that will be in question, and also a very strong right corner, Rajendra Singh. So you have to understand that it has to be a very clear decision coming in, as we have all the dignitaries here in Trans Stadia in Gujarat watching this fabulous game between services and Uttar Pradesh. The referees taking time shows that means there is some sort of a indecisive decision that is going to happen. Really important now. और काफ़ी विशिष्ट अतिथि यहाँ पर खिलाड़ियों से, पूर्व खिलाड़ियों से, मैच रेफरी से बातचीत करते हुए जनार्दन सिंह गहलोत आप देख रहे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं कबड्डी फेडरेशन के, सभी से मिलते हुए। और यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त मुकाबला, पहला सेमीफाइनल मुकाबला उत्तर प्रदेश और सर्विसेज के बीच में है और कांटे की टक्कर है। दोनों ही टीमें 19-19 से बराबरी पर चल रही हैं। As we just see the referees there, Kulwinder, oh, there we go. Review is unsuccessful for Uttar Pradesh. As I said, that's what's happened. Rajendra Singh did not realize the hands on his kneecap. So that time it is very tough for a defender to understand it. He went in for the review, lost it. Now Nitin Tomar goes into the raid as we still watch the dignitaries being escorted off. And now he is a very strong left raider. Goes across, he can attack, kicks the right cover. Surjit Narwal has to be very, very mindful of that, and he did it well. And that is the reason why he's the best defender for the services team. Surjit Narwal, you cannot just have a kick. Good attempt though by Nitin Tomar. और अब सोमवीर गए हैं रेडर लेफ्ट कॉर्नर पर, काफी अंदर की तरफ वो ले जाने की कोशिश करते हैं। और ये हैं इस समय अर्जुन देसवाल हैं 2 नंबर की जर्सी में, और लेफ्ट कॉर्नर में उन्होंने काफी पीछे उनको ढकाने की कोशिश जरूर की है। यहाँ पर अंक हासिल करना है, टच किया, क्या यहाँ पर टच हुआ या नहीं, और यस टच हुआ, 1 अंक हासिल। No, the raider was inside the lobby. That's what was being contested. Look at that. He touched the jersey, then also into the lobby. So the review is coming out because the touch was there.
the review came in favor of Uttar Pradesh, thinking that there was no touch and thinking that the lobby was not activated. Now in the replay, probably the jersey is being touched and the raider will be given safe because there he can come into the lobby. बिल्कुल सही, अगर टच करते हैं उसके बाद वो लॉबी में आ सकते हैं, उससे पहले नहीं। और बिल्कुल नजदीकी मामला है ये नवीन, बिल्कुल अगर रिप्ले में देखेंगे तो पता लगेगा कि किस तरीके से, क्या वो यहाँ पर टच किया या नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, क्या टच करने के बाद वो लॉबी में आए हैं, ये देखने वाली बात है। Yeah, Arjun Deshwal, the man in question, the decision is coming. And Yadav Saab, the main adjudicator. Review is unsuccessful. Oh, raider has been given out and says that there was no touch. And Arjun Deshwal has to go back and look what has happened. Rahul Chaudhary has been revived from the bench onto the court, and that's a big danger for the services now with 20-20 apiece here. और अब बिल्कुल उत्तर प्रदेश की तरफ से गए हैं मोहित रेड करने के लिए। लेफ्ट कॉर्नर पर उन्होंने काफी पीछे की, यहाँ पर रोकने की कोशिश जरूर की 6 नंबर की जर्सी में, लेकिन उनको होल्ड नहीं कर सके सुरजीत नरवाल। और इस